Bismillahirrahmanirrahim. It's time to welcome you, it's time to greet you. Assalamu alaikum and good afternoon. Jule and different kinds of greetings for the entire globe and the fan base of JK Sports Time. We are live from Gully's Sports Field with Kashmir Premier League quarter finale to be played between Kupwara Flies will take on Badagam Braves. Nazir, I would definitely love to welcome you here in the com box. But for all our beloved viewers of JK Sports Time, come this way, hop tabs this way, and you will find out a wonderful campaign of cricket underway here at the centre. Join us for the live action. We have got Badagam Braves taking on Kupwara Flies. We are just away from the start of this all-important quarter finale. I got my colleague in the com box. Nazir, welcome. स्वागत जेके स्पोर्ट्स टाइम के दुनिया के सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिवादन। और जैसा कि अब तक ये सूचना पहुंच चुकी है कि क्वार्टर फाइनल का ये बड़ा मुकाबला जो कि कश्मीर प्रीमियर लीग के अंतर्गत इस समय गालिजू के इस ऐतिहासिक मैदान में शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि आपको याद होगा, खेल काफ़ी विलंब से शुरू हुआ, लेकिन अंततः जो प्रतीक्षा थी वो समाप्त होती हुई, क्योंकि बड़ा मुकाबला इस समय बीच मैदान में। और बडगाम ब्रेव्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। क्या रणनीति रहेगी? दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज समय बीच मैदान में आकर्षक और रोमांचक मुकाबला। क्रिकेट की दुनिया के सभी व्यूअर्स इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जुड़ जाइए और आनंद लीजिए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। Nazir, this is a big match of the summer. We got Badagam Braves taking on Kupwara Flies. If we talk of Kupwara side, they got tons of experience. They got loads of experience. And Sheikh Junaid, it looks like he might be opening the bowling attack from Kupwara Flies, and we'll have to wait and watch the two openers out in the middle for Badagam Braves. We'll have to wait and watch. We'll come to know in a short while the two openers out in the middle, but it's going to be Sheikh Junaid. He will open the attack for his team. And talking about Kupwara side, they got wonderful guys. This is a young bunch of talented buddies. These are the young buddies, and this is our future. And our future lies in the safe hands, believe me. And this is Sheikh Junaid. He will be bowling the very first ball of the match. This is quarter finale of Kashmir Premier League edition 2, coming to you live and exclusively from Galizu Kupwara. शुरुआत हो चली है। प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुकी है। एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। और शेख जुनैद, जैसा कि हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने स्पष्ट कर दिया, गेंदबाजी का दायित्व लिए हुए अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे। और कहना चाहिए खूबसूरत मैदान, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। हालांकि काफ़ी समय ज़ाया हो चुका है वर्षा के कारण। हालांकि आउटफील्ड गीला था, विकेट भी काफ़ी गीली थी, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा पूरे। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अंततः इस मुकाबले को शुरुआत देने के लिए इम्तियाज लेफ्टी जो कि उनके साथ हैं वसीम, ये प्रारंभिक जोड़ी है बडगाम की ओर से, जो कि आज बल्लेबाजी में प्रारंभ करेंगे। और वही शेख जुनैद गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए। खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान और पहली पारी इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरू होने जा रही है। जुनैद पहले ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, और इसको खेला जरूर वहां पर सम्मानजनक रूप से, फील्ड किया बगैर किसी रन के। शुरुआत हो चली है। और वातावरण की अगर हम बात करें, क्रिकेट के अनुकूल एक हर्षोल्लास चारों ओर देखने को मिल रहा है। एक बड़ा मुकाबला केपीएल के अंतर्गत इस गालिजू स्टेडियम में। Exactly, it's a big match. These two teams have tried their level best and they managed to make it to the quarter finale of Kashmir Premier League. Entire Kashmir is playing this very tournament, and these two tried best to make it to the quarter finale. Second ball goes away from us, and that's right on money, on target, and lefty right behind the ball, off with the bat face, and look at that one, had stand still right behind the ball and off with the bat face, back to the ball for no run. It's none for none. We are in over number 1. पहला ओवर प्रगति पर, और दोनों बल्लेबाजों को संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि शुरुआती क्षण है और ऐसे में किसी भी अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। ये गेंद अच्छी गेंद, हालांकि मिडिल स्टंप पे आती हुई, और इस बार शुरुआत होती हुई पहले रन का वहां पर आगाज। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता संभवतः दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो पहली पारी शुरू हो चली है। 2 रन इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से, और खाता खुला बडगाम का 2 बगैर नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर और गेंदबाजी का दायित्व जुनैद के पास। शुरुआती क्षण, हालांकि वर्षा की अभी संभावना नहीं, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत हो चली है, क्रिकेट के समर्थक और दीवाने काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मुकाबला देखने को मिले। और आज कुपवारा और बडगाम के विरुद्ध आकर्षक रोमांचक मुकाबला बीच मैदान में बना हुआ। अगली गेंद और बाहर सीधे ये स्टंप्स ले उड़े। शुरुआत में ही पहला आधार पहुंचता हुआ बडगाम की टीम को।
Well, absolutely ripper through the air. Look at that one. Sheikh Junaid, you beauty. Knocked him over, castled him. What a delivery. And Imtiaz lefty can't do very much. It goes through his batting stance and knocking him over. And look at that one. The oval is off and it takes off. And that's a wonderful delivery. A nice pitch of a delivery. Cleaned him up, castled him. What a delivery. Unbelievable one. And this really unbelievable stuff from this man. Young fella, I was talking about this man, Nazir. He's really possessing talent. He's got tons of experience, and look at that one. That was a beauty. That was of international arena stuff. Wonderfully bowled and castled the batsman Imtiaz lefty. It's Badagam Braves 2 for the loss of 1. We are in over number 1. शुरुआती ओवर में ही एक आधार पहुंचाया वहां पर। हालांकि इस बात पर टिप्पणी जरूर हुई थी खेल से पूर्व के संयम रखना होगा, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी। हालांकि पहली पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा, आउटफील्ड गीला है और विकेट भी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेहतरीन और विश्वसनीय शुरुआत कहना चाहिए गेंदबाजी द्वारा। शेख जुनैद ने पहली सफलता दिलाई अपनी टीम कुपवारा को, और कहना चाहिए यहां से संकट की स्थिति। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, संयम आत्मविश्वास के साथ एक साझेदारी की आवश्यकता होगी। गेंदबाज को पढ़ना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे, और ये रणनीति रहेगी यहां से बल्लेबाजों की, तो एक बड़े स्कोर तक पहुंच सकते हैं। Well, exactly. You need to get your eyes in, then to for the shot. But that was a beauty, and even everyone could have been bamboozled onto that one. That was a beauty. That was a shot in dip and indecker coming into the batsman, and he can't do very much. He was knocked up, and that was a wonderful delivery. And Sheikh Junaid among the wickets straight away. We'll have to wait and watch. Newcomer walks into the middle, and it's 2 for the loss of 1. We are in over number 1. तजम्मुल नए बल्लेबाज पहुंचे हैं क्रीज पर, और कहना चाहिए किस प्रकार से, हालांकि एक दबाव की स्थिति उनको जरूर हो गई, लेकिन ऐसे में हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, और उस अनुभव का आज प्रयोग करना होगा। 2 रन बगैर 1 विकेट के नुकसान पर, क्षमा कीजिएगा, या पहला ओवर प्रगति पर। और बडगाम ब्रेव्स शुरुआत में ही एक आधार पहुंचने के बाद, जुनैद इस ओवर में अगली बार एक विकेट की खुराक लेने के बाद उनकी ये गेंद, और बार अच्छी गेंद बैट और पैड मिलाकर सम्मानजनक रूप से खेला, फील्ड हुई बगैर किसी रन के। तजम्मुल और तौसीफ की जोड़ी समय बीच मैदान में, और शेख जुनैद की जितने भी प्रशंसा की जाए उतने कम। शुरुआती ओवर में एक सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं, और कहना चाहिए जिस प्रकार से आज उन्होंने शुरुआत दी है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। Well, Nasir, don't you think that captain missed the trick, winning the toss and opting to bat first, knowing the fact that there was a lot of moisture, and even we saw that moisture in the track, but still he went with the bat first, and that's where they missed the trick, and they opted to bat first, and they're 1 down, and look at the ball is turning quite a bit, swinging, and look at that one, and it found the edge and goes down towards the third man boundary. Will it cross the boundary? We'll have to wait and watch, but that was a good ball, and batsman does well, waited for the ball and played it belatedly and guided it, steers that one down towards the third man. That yielded 3 runs to me, I think so, Nazir, and with those 3 runs, score moves to 5 for the last one. But look at that, that was another beauty, moving away from the batsman, shaping away up the deck. But we were just talking about that toss, winning the toss and opting to bowl first, opting to bat first isn't a good ploy. जी बिल्कुल, हालांकि इस विकेट पे भी जानते थे कि वर्षा हुई थी और विकेट भी गीला था, आउटफील्ड भी, और ऐसे में गेंद रुक कर आने की आवश्यकता थी, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो फैसला किया है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा महंगा साबित हो, तो हाँ, क्योंकि शुरुआती ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शेख जुनैद, और ये ध्यान में रखना होगा, एक आत्मविश्वास भरी पारी खेलनी होगी वहां पर तजम्मुल और तौसीफ को, और शुरुआत देनी होगी अपनी टीम को, क्योंकि शुरुआती ओवर में यदि आप एक सफलता खो चुके हैं तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति है, और इस दबाव से निकलने के लिए एक साझेदारी की आवश्यकता होगी, विकेट के मजाज को परखना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेना होगा। क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। Well, this broadcast is brought to you by Arco Fenestration Manufacturer, UPVC Doors and Windows, Anthem Sports India, Fashion Feast, Real Estate Pampur, Shining Star Pampur, an amateur multi-fashion branded store. Second over is about to start. We'll have to wait and watch a slip in place. Second slip, bit wideish, then backward a point. Third man is always here, and there is cover point, then short extra cover, and there is a wideish mid-off on the boundary. On the onside, there is short mid-on in place. And there is Scalag in place with this field. Second over is about to start. We'll have to wait and watch. It's 1 at the it's 5 for the loss of 1. They're 5 at the cost of 1. We are in over number 2. Tawsif and Tajammul Baba are out in the middle. On strike is Tajammul. Here goes the ball. Oh, nearly got him on that occasion, but the ball dropping short of the bowler. What could have been a regulation catch, but luckily gets away with it, and that's a dot ball. It's 5 for the loss of 1. We are in over number 2 of the match. The very first ball, Abrar bowled that. That was a good ball.
शुरुआती ओवर्स है और अबरार के पास है गेंदबाजी का मोर्चा। हालांकि इस गेंद पे का मौका जरूर बना था, लेकिन कहना चाहिए कि वो फिलहाल गंवाती हुई टीम। और इस समय स्थिति यह है 5 रन दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। अबरार इस ओवर में अगली बार लेग स्टंप पर हालांकि खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और जब तक उसको फील्ड किया जाता संभवतः गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका लगता हुआ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। तजम्मुल और तौसीफ की जोड़ी बीच मैदान में, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि शुरुआती क्षण है, एक साझेदारी की आवश्यकता है। तो ऐसे में किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी ये देखने वाले होंगे। क्रिकेट के दर्शक, समर्थक और दीवाने इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जे के स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर से निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़ जाइए हमारे साथ इस क्रिकेट के महासंग्राम में और आनंद लीजिए इस मुकाबले का। एक बार फिर दूसरा ओवर प्रगति पर। अबरार के पास है गेंदबाजी का मोर्चा और सामना करने के लिए तजम्मुल, जो कि 7 पे नाबाद हैं, 4 गेंदों का सामना किया। कुल योग 1.2 के बाद 9 रन 20 ओवर की ये पारी। 9 1 विकेट के नुकसान पर। अबरार इस बार गेंद सीधे स्टंप्स पे जा लगी। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, और कहना चाहिए दूसरा विकेट भी सॉफ्ट बोल्ड करते हुए तजम्मुल को, और मात्र 9 पे दूसरा विकेट। मुनव्वर भाई, Well, he can't do very much, and that was another beauty. That was another ripper. The ball after pitching deviated from its original path, and that's what I was talking about, Nazir. It was better to bowl first under certain circumstances, under the given conditions. Captain won the toss, and he should opt to bowl first, but he decided to bat first, and that is the reason. And Tajammul Baba can't do very much, and I believe that even that was a beauty at the international arena. The ball deviated from its original path after pitching and cleaned him up, castled him. Second blood is drawn. It's 9 for the loss of 2, and Tajammul Baba is the man to depart. And Abrar Peer among the wickets. It's 2 down at the score of 9. Nazir, 2 bowlers. Sheikh Junaid provided the breakthrough in the very first over, and followed by Abrar Peer, the 2 big guns of Badagam Braves, Imtiaz lefty, and now Tajammul Baba, both centre back, packing, and that's what Kupwara is right on top at the moment. बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दोनों गेंदबाजों द्वारा, चाहे वो शेख जुनैद हो या इब्रार हो। और पहले ओवर में एक सफलता इम्तियाज लेफ्टी को किया था चलता शेख जुनैद ने, और इस ओवर में इब्रार ने तजम्मुल को आउट करके पवेलियन की राह दिखाई। तो कहना चाहिए कि इस समय संकट की स्थिति, और मंसूर आए हैं नए बल्लेबाज। किस प्रकार से, हालांकि इस समय स्थिति गंभीर से गंभीर होती हुई बड़गाम के लिए। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। एक साझेदारी, संयम, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। सही गेंदों को मान रखना होगा, और अच्छी गेंदों, जो खराब गेंद होंगे उनको नसीहत देनी होगी। तो ये क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं, ये देखने वाली बात। इस समय स्थिति 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और दूसरा ओवर प्रगति पर। बडगाम ब्रेव्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जो कि गालीजू के इस खूबसूरत मैदान में चलता हुआ। पारी का दूसरा ओवर लेकर के, और इस शॉट से यानी कि इब्रार, जो कि एक युवा क्रिकेटर, प्रतिभाशाली क्रिकेटर, अच्छी खासी रफ्तार है उनके पास, पूरी तरह से आज रफ्तार का प्रयोग करते हैं इस मुकाबले में। 9 विकेट के नुकसान पर मात्र दूसरे ओवर में कुपवारा की गेंदबाजी से सर चढ़कर बोलती हुई इब्रार। इस ओवर में अगली बार उनकी यह गेंद, अच्छी गेंद, इस बार पैड पे लगी। जोरदार प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, नकारा वहां पर अंपायर ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जिस प्रकार से हाव भाव इस समय क्षेत्ररक्षकों के कुपवारा के देखने लायक। Well, exactly. They thought that they got the man, but in fact, umpire has something else in his mind. He shakes his head in disapproval and acknowledged to one and all that was clearly going over the sticks and over the bails on that occasion. But to me, that was a wonderful shout. But batsman gets away with it. Good decision in the end, Nazir. जी बिल्कुल। और इस समय हालांकि क्रिकेट के नियम अनुसार और निर्णय अंतिम होता है अंपायर का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हालांकि अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, पूरा प्रयोग करते हैं दोनों ऑफिशियल आज के इस मुकाबले में। और नाबाद बल्लेबाज इस समय मंसूर, और उनका साथ दे रहे तौसीफ। हालांकि तौसीफ को अभी अपना खाता खोलना है। वहीं बात करें मंसूर की, उन्होंने 1 रन बनाया है, और कुल योग इस समय अगर बात करें 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद वर्धमान रन गति 5.40। और इब्रार इस ओवर में अगली बार नए बल्लेबाज के लिए राइट आर्म, उनकी ये गेंद पर लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंदबाजी। हालांकि विकेट कीपर की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम, निश्चित तौर पे वहां पे कुछ रन बचाए, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल का अतिरिक्त के साथ ही स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 10-2 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। Well, Abrar is bowling in the right areas, following the footsteps of Sheikh Junaid. The way he bowled in the very first over, things are quite under
under eyes, and they're really working on the basics of the game, and they're trying to make sure that they tighten the nose of the batters. In the meantime, it's 10 for 2. Here goes the bowler. That's a good ball, and steers that one, but straight to second slip. There is Taimir. Won't be any run. It's 10 for the loss of 2. We are in over number 2 of the match. Nazir, you have to make sure that you get your eyes in then top of the shot, and under certain circumstances, at this crucial juncture, you need to put your heads down and stitch up ownership. That can really set the tone for the good score. मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि यहां से गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलना होगा, थोड़ा सा संयम रखना होगा, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की। हालांकि समय की भी इस समय आवश्यकता है कि एक साझेदारीपन पे क्रिकेट के स्वाभाविक खेल की बात करें तो छोटी छोटी तिगड़ियां हैं जो आपको बड़े स्कोर तक ले जा सकती है। इस ओवर में इब्रार अगली बार उनकी गेंद इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हालांकि बल्ला जरूर गंवाया लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। स्कोर अभी भी टिका हुआ 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मंसूर और तौसीफ बीच मैदान में बने हुए और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी में। खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण अपने चहीते व्यूअर्स तक पहुंचता हुआ। बने रहिए और इस मुकाबले का आनंद लीजिए। एक खूबसूरत कांटे की टक्कर का मुकाबला इसमें बीच मैदान में चलता हुआ। Well, exactly. A match worthy of the quarter finale. The team which will win today will make it to the semis of Kashmir Premier League Edition 2. Not a joke. It's going to be a big, big achievement. And at the moment, it's 10 for the loss of 2. We are in over number 3. Sheikh Junaid will continue bowling from this very end. And on strike will be Mansoor for the first time will face Sheikh Junaid. It's 10 for the loss of 2. We definitely love to thank our blood sponsors, Arco Fenestration, followed by Anthem Sports India, Fashion Vista, Shining Star Pampur, Real Estate Pampur, and MHM Multi-Fashion Branded Store, Agri Clan Magam. It's 10 for the loss of 2. Scoring at the rate of 5. And project score seems to be 100, but it will be early to say that they will finish on 100 because a long way to go, 18 overs remaining. Things can really change. This is the game of glorious uncertainties. In the meantime, Junaid begins the pressure. The very first ball and wanted to play cross the line, wanted to sweep that one, missed the line ball completely. And a look at wicketkeeper standing way back, does well in style. It's 10 for the loss of 2. We are in over number 3. The first ball is dot. Let's wait and watch what's going to come. Your way, our way on the ball number 2. With wide slip in place. Third man back with a point. Cover point. Short extra cover and a sillier cover is in place. And there is long off in place. Mid on in place. Oh, that one skidded off the surface. Arrived belatedly. It was early into the shot. But you remember that ball from Abrar Peer, which nearly got the batsman on the occasion, wrapped him below the knee roll, and for me it looked like that with plumb, but in the end umpire decided something else. But in the end it was a good decision nonetheless. 10 for the loss of 2. We are in over number 3, but that was a 3 tries, and every bowler would definitely love to beating the batsman on that kind of a delivery, coming into the batsman and shaping in, and then batsman beating all landers up on that occasion. It was beauty from Abrar P. Sheikh Junaid continues. 10 for the loss of 2. We are in over number 3 of the match. Third ball. Here goes Sheikh Junaid with one slip in place. Goes and bursts to Tawseef and clipped away, but straight to the short mid-wicket fielder. No run there. Is 10 for the loss of 2. We are in over number 3. Halfway down into the third over. 10 for the loss of 2. Those who just joined the live broadcast. The news from the centres. The very vital toss won by Badagam Braves captain, and he decided to bat first against Kupwara Flies. In the meantime, Junaid will bowl the next one with a sandfield. No change on either side of the track. Here goes Junaid once again and bows. That's a beauty. That is a short beauty. Moving away from the batsman, and batsman offered the bat face. But luckily, blessing in disguise, I should say, the ball didn't find an edge, and it goes straight into the hands of wicketkeeper. So no harm done. It's 10 for 2. We are in over number 3 of the match. गेंद और बल्ले के बीच इस समय संघर्ष चलता हुआ, संघर्षपूर्ण मुकाबला, और जितनी भी प्रशंसा की जाए गेंदबाज की उतने कम एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप पर इस बार जगह मिली, उसको निकाला, लेकिन उस और खिलाड़ी है तैनात जब तक उसको फील्ड किया जाता। स्वाभाविक तौर पर 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर मंसूर और तौसीफ की जोड़ी बीच मैदान में, और एक कहना चाहिए कि विराम सा लग गया है रनों की गति पर, जिस प्रकार से दोनों छोर से गेंदबाजी हुई, और कहीं ना कहीं शुरुआत में इस विकेट पे बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा। संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। इस बार ऑफ स्टंप पर, हालांकि फील्डर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, पीछे खिलाड़ी है उसके पीछे, लेकिन जब तक उसको फील्ड किया जाता स्वाभाविक तौर पर 2 रन और खाते में जुड़ते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन
2 विकेट के नुकसान पर इस समय बडगाम ब्रेव्स की टीम टॉस जीतकर इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जो कि कश्मीर प्रीमियर लीग के अंतर्गत बीच मैदान में चलता हुआ और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अब तक मिल चुकी है गेंदबाजों को। Well, Badagam Braves are the defending champions of Kashmir Premier League. Last time when it was the very first edition of KPL, and it was Badagam Braves, they held the nerve to go on to lift to the first title. This is second time round they made it to the quarter finale, but this time round it's going to be a big battle between Kupwara Flies and Badagam Braves. We are in over number 4 of the match. Abrar to continue, and captain has decided to bowl out his second over, and this is going to be over number 4 with 2 slips in place. Then backward a point, cover point, short extra cover. Here goes Abrar to Tausif and Bows, and wrapped him on the pad. Straight away umpire raises the finger. Wicket number 3 goes down. Can you believe? Trapped in front of the 3 reds, and there goes wicket number 3. It's 13 for the loss of 3. We are in over number 4 of the match. Thank you all the beloved viewers for tuning into the live broadcast, for coming this way. But Khalid, Majid Baba, Aidan Ashraf, Ghulam Hassan Dar, and Pir Wasim, Latif Para, Ghazi Imu, Batriya, Sopi Bilal, and Abdul Qudus, Musabir Rath, Saki, and Lon Altab, Mudusha, and Sopi Irfan. And these are the beloved viewers of JK Sports Time, Danish, Magre Abbas, and Ghulam Hossain. Thank you all the beloved viewers for tuning into the live broadcast. We're seeing the back of Tausif. 3 top order batters send packing, beat Imtiaz lefty, followed by Tajamul Baba, and now Mansoor joins the tally. Tausif joins the tally. 3 of the top order batters send packing, and they are in dire straits at the moment. They are under the serious hammer and punch, and they are reeling under the serious pressure at the moment. And we would definitely love to thank Shah and others for tuning into the live broadcast. Beg Ijaz, Imran Hassan, Danish Khan, Mushtaq Khan, Hamas Malik, Altaf Hussain, Sheikh Shafi, and Malik Wasim, and Divil's Mind, followed by Danish Ahmed. Thank you all the beloved viewers, and Walaikum Salam to all the beloved viewers of JK Sports Time this afternoon. It's 13 for the loss of 3. 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज थे वहां पर तौसीफ, जिन्हें के अबरार ने पगबादा करार दिया गया। उन्हें अब अंपायर द्वारा, और कहना चाहिए जिस प्रकार से आज शुरुआत हो चली है गेंदबाजी में, बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन कुपवारा द्वारा, और जिसके चलते मात्र 3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद बडगाम ब्रेव्स की टीम 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर संकट की स्थिति समय बनी हुई, और अबरार के खाते में अब तक 2 सफलताएं संभवतः चली गई है, और एक जुनैद के खाते में जाहिद डार नए बल्लेबाज आए हैं, और काफी कुछ निर्भर करेगा एक अच्छे अनुभवी बल्लेबाज। हालांकि जिस प्रकार से वे बल्लेबाजी करते हैं, आज वो उनको आवश्यकता है, टीम को आवश्यकता है, इन परिस्थितियों में किस प्रकार से वे बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा। और इस समय संयम, आत्मविश्वास, जिसकी कि हम लगातार टिप्पणी करते हुए इस मुकाबले में, उसकी आवश्यकता है। क्या इसमें वो सफल हो पाएंगे अथवा नहीं, क्योंकि शुरुआती ओवर्स मात्र 4था ओवर प्रगति पर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर कश्मीर प्रीमियर लीग के अंतर्गत ये इस समय मुकाबला जो कि बडगाम और कुपवारा के विरुद्ध चलता हुआ इस गालिजों के खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में। Abrar to continue. On strike will be Zaid lefty, and he waits for the ball. Here goes Abrar with Silip and Gully in place for Zaid lefty. Oh, that's a good ball, right and money on target, and equally to the task. And look at that one, had stand still, and he takes that one in the middle of the blade, and that's called the carpet of the blade, and keeps it out where the Shasilia cover position. There is Captain Sheikh Junaid the fielder. No harm done. It's 13 for the loss of 3. Nazir, we are in over number 4 of the match, and who would have thought that Badagam side will be reeling under the serious hammer and pressure, and they will be losing their wickets like pack of quarters. They lost 3 wickets in a bit of a cluster. In the meantime goes, and is there any edge? No, Dawson. He wanted to try that one, but luckily the ball eludes the bat into the safe hands of the wicketkeeper. Luckily gets away with it. That was a beauty. That was a wonderful delivery, and beaten all enders upon that occasion. 13 for the loss of 3 over number 4 in progress. And Abrar Pir, who would have thought that he's really possessing talent, and is a serious prospect from this spot of the world, from Kupwara. In the meantime, it's 13 for the loss of 3. On strike, Zaid lefty will wait for Abrar Pir, and Pir goes away from us, crosses umpire and Bows. Oh, that's a good ball. Once again a beauty, but equally to the task. Right on money, but right on money. It was the batsman on that occasion. Equal reaction onto that one. He puts bat onto it and keeps it down towards the Ciliar mid-on area for no run. No harm done. 13 for the loss of 3. We are in over number 4 of the match. Nazir.
13 रन 3 विकेट के नुकसान पर ये पारी का चौथा ओवर इसमें प्रगति पर। और इस प्रकार से हालांकि गेंदबाज को पढ़ना होगा, विकेट के मजाज को पढ़ना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे दोनों बल्लेबाजों को। जाहिद लेफ्टी सामना करने के लिए अवरार का, उस बार अच्छी गेंद लेगो मिडल पे आती हुई हल्के से उसको प्लेस किया, जब तक उसको फील्ड किया जाता संभवतः तौर पर 1 रन और 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। कुल योग बढ़ता हुआ 14 रन चौथे ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। मंसूर और जाहिद लेफ्टी की जोड़ी बीच में, जाहिद ने खाता खोला, 4 गेंदों का सामना किया। काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि शुरुआती ओवर में इस समय टीम संकट की स्थिति में फंसी हुई, एक साझेदारी की आवश्यकता है और जिस शैली के आप बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप यहां पे बल्लेबाजी करनी होगी अगर यदि यहां से एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं तो। बडगाम ब्रेव्स इस समय संकट की स्थिति में और पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। Riyaz Spear says that Badagam batters, they need to take time, they need to get their eyes in then to play. You know, Riyaz Spear is a terrific batter is a terrific cricketer from Central Kashmir. जी बिल्कुल, उनकी बात से हम सहमत हैं। इस बार अबरार की गेंद अच्छी गेंद, हर बार मिड स्टंप पे आती हुई नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन अंतिम समय सिर्फ गेंद को बल्ले से टकराने पर दिया। फील्ड हुई क्षेत्र रक्षण दौड़ा, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। जाहिद और मंसूर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में बात करें बडगाम की ओर से। और अगर कुपवारा के गेंदबाजों की बात करें, क्षेत्र रक्षकों की बात करें, बहुत ही लाजवाब और विश्वसनीय प्रदर्शन अब तक देखने को मिला इस पहली पारी में इन शुरुआती ओवर में, जिसके चलते मात्र 4 ओवर में 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वर्तमान रन गति की बात करें 3.50 के हिसाब से इसमें रन बनाती हुई और कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में, कांटे की टक्कर का मुकाबला ऐसा क्रिकेट के समर्थक मानते हैं। जिस प्रकार से दोनों टीमों की अगर हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने की आशंका होगी जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा। Well, exactly. Both teams are possessing talent, and our beloved viewers should come this way and find out the fizzle at Campan for their interest. And this is a wonderful game of cricket. And don't go anywhere, don't fade away, come back. We have a game on here at the centre. It is Zaid lefty out in the middle, and joined by his colleague Mansoor. And one has to play the second fiddle, and the other one has to launch the counter-attack. In the meantime, wrapped him on the pad. Shot for LBW, and umpire raises the finger. Can you believe? Fourth bullet is drawn. Nasir. And there goes wicket number 4, and Zaid lefty has to walk back. Beauty and Sheikh Junaid. And look at Kupwara side, the pumped up. It's time to celebrate, and the celebration time begins in their dugout and in their camp. They join it together. We have seen the back of fourth one. It's 14 for the loss of 4, and Zaid Lapti doesn't want to leave the centre, but he has to walk back. And we have seen the back of one more bat. It's 14 for the loss of 4, and what a dream start. What a dream start for Kupwara side. And the Flies are really flying. They got their tempo literally up at the moment, and there are cloud 9 at the moment. 14 for the loss of 4. We are in over number 5 of the match. Mandatory restrictions are on. And we'll have to wait and watch. But Manzoor, Vilayat Hussain, and Bhat Zahur, and Dr. N.T. Lemelos, Amir Bhatt, Sophie Akib, and Hilarious Silal, Mani Vani. And we'll have to wait. And Sheikh Shaheen, Adil, Wasim Ahmed, Zuhur Kupwara, and Javed Wani, Muzammil Malik, S. Ali Razvi, Khan Majid, Khan Farhat, Riyaz Peer, Abid Yusuf, Danish Khan, Farooq Bhatt, Uwais Munir, Imu, Heartless, Miraves. And these are the beloved viewers: Riyaz Peer, John Mai, and Saeed Asadullah. Thank you all the beloved viewers. Well, somebody is talking about Nazir, someone is talking about that umpire's decision, but I think it was a wonderful decision. It was a brilliant call from umpire on that occasion. And once again, he trapped him in front of the 3 sticks, and if we put the ball trackle onto that one, it was definitely going on to hit the 3 reds. And there goes wicket number 4. It's 14 for the loss of 4. We are in over number 5, but look at this man, Sheikh Junaid. The man leading from the front has really set the tone, and they can really restrict their opponents below 100 today. And they should be trying their level best, because they got their tempo literally up at the moment, and they are really on cloud 9 at the moment. Can they really bounce? Can they really dent the confidence of their opponent's side? But Badagam Braves, they're the defending champions of Kashmir Premier League, but this time round they're reeling under the pressure. 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद रमीज और मंसूर की जोड़ी समय बीच मैदान में। रमीज नए बल्लेबाज आए हैं, काफी कुछ निर्भर करेगा इस समय। और जिस प्रकार से शुरुआत, हालांकि लगातार इस शॉट से गेंदबाजी के मोर्चे पे जुनैद बने हुए। इस ओवर में अगली बार सीधे बल्ले से खेला, जरूर 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर। कहना चाहिए अगर सटीक स्टंप्स पे थ्रो लगता तो खतरे में पड़ सकते थे। अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। शुरुआती ओवर में आप 4 विकेट गंवा चुके हैं। 4 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज इस समय पवेलियन जा चुके हैं, और ऐसे में यहाँ पे
कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि आप अतिरिक्त जोखिम उठाएं, संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करें एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर और तहलका मचा दिया है इस समय शुरुआती ओवर में गेंदबाजों ने। शेख जुनैद और अबरार पीर ने बहुत ही बेहतरीन विश्वसनीय गेंदबाजी और कहना चाहिए यहां पे आत्मविश्वास की कमी देखने को मिली बल्लेबाजों द्वारा, जिसके चलते मात्र 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में। इस ओवर में अगली बार शेख जुनैद 2 सफलताएं प्राप्त करने के बाद बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर अपनी जगह खड़े खड़े खेलने की कोशिश और गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई। जब तक उसको फील्ड किया जाता रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर टिका हुआ 15 4 विकेट के नुकसान पर। और जिस प्रकार से गेंदबाजी अभी तक हुई है तो मैं समझता हूं जितनी भी प्रशंसा की जाए गेंदबाजों की उतनी कम। निश्चित तौर पे एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी हुई है। Well, exactly. They love to take on the batters in style, and the way they're bowling, and that is in the air, and there is field, but that will definitely evade him over the backward point field all the way for 6, and that is really a wonderful, top-notch, wonderful class, and this is really a classic act from the batsman. There was a time in the world, even in the cricketing field, and it was quite hard to hit the ball out of the park in that very area. Through this area, it was quite difficult, but look at that one. That is a wonderful inside out, and goes over backward a point, and yielded a 6. 21 on the board for the loss of 4, and this is a welcome sign and a welcome 6 for Badagam Braves. After a long time, they can really celebrate that 6. Oh, way down the leg side, and they should run away down to the 5-leg boundary for 4. Back-to-back boundaries, a 6th and followed by boundaries. Score moves to 25, Nazir, and that was a wavered one. He has to be disciplined out there with the ball and a little bit ear in length and allow the batsman to tickle onto that one down to the long leg boundary for 4. बहुत ही कहना चाहिए कि स्वाभाविक रन कहे जा सकते हैं। हालांकि पिछली गेंद पे बहुत ही बेहतरीन इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था 6 रनों के लिए, और इस बार लेग स्टंप पर हालांकि दिशाहीन गेंद थी और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 25 इस समय 4 विकेट के नुकसान पर, और कहीं न कहीं 2 स्ट्रोक्स के चलते आत्मविश्वास लौटा होगा बल्लेबाज मंसूर का। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद इस बार खेला ऑफ स्टंप से, वहां पर मिस फील्ड का नतीजा। हालांकि पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, जब तक उसको फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, गेंदबाज के पास 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ बल्लेबाजों के। और कुल योग बडगाम ब्रेव्स का 26 4 विकेट के नुकसान पर। कहना चाहिए कि एक शुरुआत, धीमी शुरुआत, हालांकि खराब प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है। इसी बीच बिलाल लोन और उसके बाद वानी भी हमारे साथ, इकबाल दशनवी के साथ मंजूर सईद भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं, बिलाल भट्ट, वानी जाफर और उमर फारूक भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। सनउल्लाह गनाई, इकबाल दशनवी, गोहर और मीर मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ बने हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। ये सीधा प्रसारण गालीजू के इस खूबसूरत मैदान से आप तक पहुंचता हुआ, और मुकाबला कश्मीर प्रीमियर लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत बडगाम ब्रेव्स और कुपवारा के विरुद्ध चलता हुआ। 26 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। पहला पावर प्ले समय प्रगति पर, और रमीज मंसूर ये 2 मान्यता प्राप्त जोड़े बीच मैदान में बने हुए, और कहना चाहिए 13 रन पे नाबाद 9 गेंदों का सामना किया मंसूर ने, और वहीं पे रमीज जो कि 1 रन बनाकर 1 गेंद से। तो काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। एक साझेदारी की आवश्यकता है, क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं। नए ओवर की शुरुआत एक बार फिर, और यहाँ पे जिस प्रकार से जुनैद और इब्रार ने लगातार गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए, मैं समझता हूँ एक बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय देते हैं, क्योंकि दोनों गेंदबाज अब तक हावी रहे हैं बल्लेबाजों पे। Well, exactly. They've shown the composure, the class. They kept bowling in that corridor of uncertainty, and they kept the batsmen guessing, and that's why they are so successful. It's 26 for the loss of 4. Fresh beginners, and Pete bowled the very first ball, clipped away. Fielder gives the chase. Captain gets to the ball in time and sends us in the return. Before he could return the ball, the 2 batters had ample time in the ball to scamper through for a quick single. 27 for the loss of 4. We'd like to thank Said Rizwan Gilani, Sonu Ahmed, Rasik Farouk, and Mudassir Rashid, and Chordia, Mohammad Iqbal Sheikh, and Amar Mir and Aftab King. Thank you all the beloved viewers for tuning in to the live broadcast. Umar Farooq, thank you, and Hatim Mir, Bud Basu. These are the beloved viewers of JK Sports Time. Going through the sponsors panel, it's Soccer Fenestration, followed by Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pampur, Real Estate Pampur, and MHM Multi-Fashion Branded Store. In the meantime, next ball from abroad, he goes away from us and bows. Oh, that's a good ball. And he wanted to escape for a kick single, but saw the fielder pouncing on the ball as agile as cat, and he decided to go back to the crease, and he's right back to the safety of the crease. No harm done. Score remains 27 for the loss of 4 wicket. We are in over number 6 of the match, last over of the mandatory power play. Nazir winning the toss and opting to bat first. I think it was a wrong decision made by the captain.
And because there was nothing wrong with the batters, it was the beauty of the pace and the pitch realized it has a role to play. मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस गेंद के बाद इस पर चर्चा जरूर करेंगे। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद सिर्फ दिशा पर दे दी उसको, हालांकि खिलाड़ी उसके पीछे जब तक फील्ड किया जाता दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी दौड़, जितनी भी प्रशंसा की जाए बल्लेबाजों की उतने कम। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए और कुल योग बढ़ता हुआ 29 4 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद। और अगर बात करें इस मुकाबले की, हालांकि वर्षा काफ़ी हुई थी इस मैदान में और कहीं ना कहीं आउटफील्ड भी काफ़ी गीला था, विकेट भी गीली थी, तो काफ़ी विलंब से ये खेल शुरू हुआ। हालांकि समय अनुसार 10 बजे का समय था, लेकिन मुकाबला 1:30 बजे शुरू हुआ और जिसके चलते दोनों टीमों के जहन में ये जरूर था टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना। मैं समझता हूं अब तक का जो निर्णय खराब साबित हुआ, गलत निर्णय साबित होता हुआ। मात्र 29 पे 4 5.3 के बाद रमीज और मंसूर की जोड़ी बीच मैदान में। Well, Badagam has got a lot of batting to come, so don't go anywhere, don't fade away, come back. It's time to say match on and game on here at the Sun. In the meantime, that's all that is. Oh, he's knocked him over. And look at that one, he looks back in disbelief, but he has to walk back. It's 5 down at the score of 29. Once again, commentators, Curse Nazir, we can't say anything. What's going on? What Kupwarans have done today? This is really unstoppable, and they're ripping through them. And this has really been a wonderful bowling. This has really been the potent bowling attack from Kupwara's side, and the Badagam side. They're reeling under the serious hammer and pressure. They're 29 for the loss of 5. Half of the team, can you believe? At the start of the innings, who would have thought that they will be falling like pack of coders? They lost wickets in a bit of a cluster, 5 down at the score of 29. And the beauty of Kupwarians, they're really displayed the character they're known for, and they've really been bowling in the right areas, not giving an inch away. And that is the reason they have been able to castle 5 of the batters, 5 of the top order batters have been sent to packing. And now it comes down to the middle and down the order batters. It is the high time for the Kupwara side. As soon as possible, they have to try the level best and try to wrap up the tail as early as possible. निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बल्लेबाजों द्वारा। संयम और आत्मविश्वास की कमी यहां पे दिखाई देती हुई, और वहां पे पूरा क्रेडिट देना चाहिए गेंदबाजों को। बेहतरीन नपीतुली कसी हुई गेंदबाजी, और कहना चाहिए एक मनवनिक दबाव की स्थिति बनी हुई और उससे निकलने की कोशिश हालांकि जरूर किए जा रहे हैं, प्रयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं बल्लेबाज बड़गाम के। 29 5 विकेट के नुकसान पे और ये 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद जुनैद और इब्रार पीर, ये 2 मान्यता प्राप्त गेंदबाज जिन्होंने आज प्रारंभ किया था गेंदबाजी में कुपवारा की ओर से। लगातार दोनों गेंदबाज हालांकि 3 ओवर की गेंदबाजी की है जुनैद ने, और तीसरा ओवर अपने कोटे का फेंकते हुए कुल मिलाकर पारी का 6ठा ओवर अबरार पीर। नए बल्लेबाज कर इस पर पहुंचे हैं हारिस और मंसूर के साथ। हालांकि मंसूर इस समय 14 पे नाबाद है, 10 गेंदों का सामना किया, 3 सफलताएं प्राप्त की हैं अबरार पीर ने। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम। क्या बेहतरीन, लाजवाब और विश्वसनीय प्रदर्शन गेंदबाजी में देखने को मिला इब्रार द्वारा। 29 पे 5 5.4 के बाद, और जिस प्रकार से आज गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल सटीक लाइन और लाइन के साथ। इब्रार इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद और बाहर अच्छी गेंद, आवश्यकता के गलियारे में फेंकी हुई गेंद, ऐसे तैसे करके सम्मानजनक रूप से बैट और पैड मिलाकर खेला बगैर किसी रन के, और स्कोर अभी भी टिका हुआ 29 5 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल, अच्छी खासी क्रिकेट के समर्थकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। I think new bowlers should try and watch the bowling of Abrar Pir. They should learn how to bowl to the newcomer. That is right on money into the block hole to be precise. But the batsman tried well, digs it out back to the bowler. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस बार, अच्छी गेंद, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, और इस बार भी धकेलने में सफल रहे। और क्या खूबसूरती है जिस लय के साथ आज गेंदबाजी हो रही है, क्रिकेट के समर्थकों को देखने के लायक होगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जुड़ जाइए हमारे साथ और मजा लीजिए इस कांटे की टक्कर के मुकाबले का। Well, exactly. It's 29 for the loss of 5. We are in over number 6 of the match. It was the last ball of the 6th over. 6 done and dusted. 6 gone. It's 29 for the loss of 5. Badagam side, Mansoor and Haris. These are the 2 batters out in the middle. Now the entire responsibilities are laid on their shoulders. They need to shoulder the innings from here on to take themselves to some sort of respectability in terms of runs. We can look at that figure. It's 29 still at the cost of 5. And they still have 14 overs to go, 14 overs to come. 84 legitimate balls are going to come. Just try to battle it out, sweat it out, give everything to this inning number 1. You can really finish right on top at the end of the match. In the meantime, Sheikh Junaid will begin the fresh show. It's going to be over number 7 in his 4th. And he will try to finish his quota. That's a good shot. Beautifully done. And chase for the fielder, but won't get there.
It's one bounce into the extra cover boundary for 4. Nicely done, neatly done. Up drive and driven aerial, but down towards the boundary. One bounce for 33 for the loss of 5. पहली बार आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक देखने को मिला है बल्लेबाज द्वारा और कहीं न कहीं ये आत्मविश्वास लौटेगा इस स्ट्रोक के बाद बल्लेबाज का 33 5 विकेट के नुकसान पर 6.1 के बाद अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के जुनैद टीम के कप्तान भी हैं इस पारी में फेंकते हुए कुपवारा की ओर से। इस ओवर में अगली बार गति में परिवर्तन सीधे बल्ले के साथ खेला जरूर, हालांकि एक हल्की सी आहा, लेकिन गेंद जमीन पर लगने के बाद क्षेत्र रक्षण के हाथ में और कोई क्षति नहीं, रनों की गति में भी कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 6.2 के बाद 33 5 विकेट के नुकसान पर। हारिस अभी उन्हें अपना खाता खोलना है और बात करें मंसूर की 18 रन बनाकर 12 गेंदों से नाबाद, वर्तमान रन गति 5.21 और कहीं ना कहीं एक साझेदारी की आवश्यकता है। क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं। इस बार ऑफिस सबसे बाहर निकलती हुई गेंद, बल्ला उड़ाना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। 33 5 विकेट के नुकसान पर जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम, आर्को फैन स्टेशन, रियल इस्टेट पांपोर, फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। धन्यवाद सभी का अपना समर्थन और सहयोग देने के लिए और इसी प्रकार से सभी व्यूवर्स से भी अनुरोध होगा कि हमारे साथ जुड़ जाइए और क्रिकेट का ये महासंग्राम बीच मैदान में चलता हुआ, हालांकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है इस मुकाबले का। 14 ओवर का खेल बाकी है, 5 विकेट हाथ में है। क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो कहना चाहिए एक संघर्षपूर्ण मुकाबला और क्रिकेट के पल पल की खबर आप तक जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंचती हुई। Sheikh Junaid goes away from us, crosses umpire and bows. Oh, play back to the bowler, nearly a regulation catch. Would have been a regulation one. Play back to the bowler. They escape for a quick single, but nearly got him on that occasion. But the ball evades and eludes the bowler on that occasion. And Sheikh Junaid was into his run-up and he was nearly 5-6 yards down into the pitch. It's 34 for the loss of 5. But nearly got Mansoor on that occasion. Haris comes back on to strike. We'll have to wait and watch. A slip in place. Raja Tanveer, the left-hander, is there. Then there is third man. There is backward a point. There is extra cover. There is sillier cover in place. And there is sweeper cover on the boundary. With this field, here goes Sheikh Junaid once again. Clipped away in the aerial. He had his hurt in his mouth for a while, but nonetheless, we'll get a single for it. Its score moves to 35 for the loss of 5. We are in over number 7 of the match. Current run rate is 5.10 and project score seems to be 1 or 2 if they manage to carry on and prosper with the same current rate. And that won't happen to me because the game of glorious uncertainties will definitely change its colors if these two tend to bat out the remaining. Oh, that's in the air. Will this be held? It looks like the man underneath the ball. He holds on to the ball. Can you believe? 6-1 bites the dust. Nazir, there was no need to play such kind of a rash shot. Got over cautious, and the outcome is he has to walk back to the pavilion. इस विकेट पे जैसा कि खेल से पूर्व हमने इस बात पर टिप्पणी जरूर की थी, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी बैठे थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि इस विकेट पे संयम रखना होगा और अगर आप आत्मविश्वास के साथ, संयम के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो अच्छी खासी रन आप बना सकते हैं इस विकेट पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस समय एक के बाद एक लगातार अंतराल के बाद विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो चल में आया कि स्थिति बनी हुई और 35 पे 6, इस समय 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो क्या कहना, किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी होगी, अस्त व्यवस्थ करके रखा है गेंदबाजों ने जिस प्रकार से। और एक बात और यहां पे तय होगी, इब्रार और शेख जुनैद ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की, हालांकि अभी भी तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। Well, exactly. I remember the great peak of international cricket bowling, be it Caribbean bowlers. They love to bowl in a combo. And today the combo of Abrar Fir and Sheikh Junaid has really worked for our Kupwara side. They've really been right on top of their opponent's side. They have been cashing in with the wickets time and again. It's 35 for the loss of 6. Badagam Braves, they won't even imagine what is happening to the batting attack. They won't even dream of this kind of a start. But this is a dream start for the Kupwara side. Exactly, they get 6 batters up front. They're 35 for 6 and this has really been a wonderful bowling package. The combo has really worked and they have really been possessing the threat to the batting attack. They're 6 down at the score of 35. Can you believe things going like this? Who would have thought that Badagam Braves, the defending champions, will be reeling under the serious hammer and pressure?
आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट आप देखिए, जिस प्रकार से दबाव बनाने की स्थिति, और इसी मुद्रा में सामने वाले छोर से इब्रार पीर नए ओवर की ओर शुरुआत करते हैं। बैकफुट पर जाकर के खेलने की कोशिश वहां पे, हालांकि एक हल्का सा प्रश्न पूछा जा रहा है अंपायर से, उससे हमें ज्यादा विश्वास में कम, नकारा उसको, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता है 36, 6 विकेट के नुकसान पर 7.1 के बाद। One more thing I would definitely love to add to this commentary is that Captain tends to bowl with his colleague. He is going to be in his fourth, and Captain want to end up and finish his quota too. And look at this combo. He is bowling his fourth over straight away, bowling 4 overs consecutive. It is not a joke. It takes something. It takes a kind of a dedication. You must be gutsy out there on the track and on a given day. But look at this man. He's really possessing the talent. He is swearing it out under the sweltering conditions at the moment. इब्रार की ये गेंद, अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद खेला सीधे बल्ले से फील्ड हुई बगैर किसी रन के। और क्रिकेट की स्वाभाविक खेल की बात करें तो मानसिक तौर पर भी आप यहाँ पे विकेट पे तैयार रहने चाहिए। और जिस प्रकार से आज देखा गया कि आत्मविश्वास की कमी वहाँ पर देखने को मिली, और आत्मविश्वास की कमी जो देखने को मिली, उसके चलते इसमें मात्र 36 पे 6 विकेट गंवा चुकी है टीम। We did discuss early in the morning when we arrived here at the Sun. We saw that there was lot of moisture laid on the track, even in the outfield area. We too discussed that the captain winning the toss should opt to bowl first. But look at that one. Captain won the toss and asked, and he decided to bat first for the first time here at this all-important cricket centre of Gullies of Kupwara. But that wasn't a good decision in the end. And he could have Googled that one, and he would have definitely find out on Google, through Google, and that what should I do under certain circumstances, under the given conditions. But he straight away decided that we're going to bat first, knowing the fact that there is a lot of moisture and there were overcast conditions at the start of the innings. And the Kupwara side, they really took that opportunity and bowled in the right areas. बहुत ही बेहतरीन लाभ लिया इस गेंदबाजी से उन्होंने, और अबरार की गेंद, अच्छी गेंद, और वहां पर बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 7वां नुकसान उठाना पड़ा। 8वें ओवर में 36, 7 विकेट के नुकसान पर उत्साह का ठिकाना नहीं। क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, और इस समय 7वें विकेट का पतन होता है मात्र 36 पे। Well, this has really been unbelievable. What an attack. This has really been fantastic and fantabulous effort from the bowling side. But look at that one. That was a beauty. And are we witnessing a match here in England or in New Zealand? But look at that one that flies away from the batsman. And wicketkeeper does well. Going towards his right, holds on to the ball. 7th ball is drawn, 36 for the loss of 7. Well, look at that. The crowd is thronging into the centre, but Kupwara, they're right on top. And Badagam Braves, they're 7 down. We are into the tail. It's time to welcome the tail. But in the meantime, I would definitely love to add one more point to this. But nowadays, the selectors use the 3-dimensional formula to select the team. Nowadays, the bowler is selected if he manages to bat and field well. So we can't say we're into the tail, but literally we can say to some extent we're into the tail. मैं आपकी बात से 7% सहमत, और इस समय कहना चाहिए जो मान्यता प्राप्त बल्लेबाज हैं वो पवेलियन जा चुके हैं। 36 पे 7.4 के बाद वर्तमान रन गति की बात करें तो 4.70, और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करें स्क्रीन पे दिखाई देता हुआ 94। लेकिन क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल है, और जिस प्रकार से आज गेंदबाजी हुई है, 4 सफलताएं मात्र 10 रन देकर अबरार पीर के खाते में, और मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा इस प्रतियोगिता का। Exactly, this has really been exceptional bowling spell, and what a spell from this man Abrar Pir especially. He has picked up 4 wickets and casted just 10 runs, and that tells the entire story. But credit must be given to the captain, leading up run, using the 2 bowlers, using their combo to perfection like that in this wonderful fashion. But from other side, if we talk about Badagam Braves, they're losing their wickets in a bizarre kind of a manner, bizarre show and a flop show from their side. They need to get their eyes in, then top of the shots. Still a long way to go in this match. You are still alive in the match. Make sure that you're going to put your 100% into this one. Put 3 Memoni wickets, stuck to the basics, play the ball on merit. You have still 12 overs to go. 12.2 balls are going to come, 74 balls remaining, and you can still set the tone for the good chase. अगर हर ओवर में 6-7 रन 8 रन बटोरते हैं यहाँ से संयम के साथ, आत्मविश्वास के साथ, तो भी आप तहरे अंक में पहुंच सकते हैं। 100 से बड़ा स्कोर, और कहना चाहिए लो स्कोरिंग मैच काफी घातक हो सकते हैं नए ओवर की शुरुआत। हालांकि ये क्षमा कीजिएगा 8वां ओवर प्रगति पर है, और इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद शरीर पे जा लगी, वही पास में लौट की बगैर किसी रन के। 36, 7 विकेट के नुकसान पर। और एक बार जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर से निवेदन होगा कि जुड़ जाइए और आनंद लीजिए इस मुकाबले का, जो कि कांटे की टक्कर का मुकाबला। हालांकि क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल है, अभी भी आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव
संभव नहीं होगा। एक संघर्षपूर्ण और क्रिकेट का संग्राम इस समय बीच मैदान में, जो कि केपीएल के अंतर्गत वर्ष 2022 का दूसरा सत्र चलता हुआ जेके स्पोर्ट्स टाइम आप तक का इस सीधे प्रसारण में पहुंचता हुआ। और प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम आर्को फेनस्ट्रेशन रियल इस्टेट पंप और फैशन पिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। वहीं पे कुपवारा क्रिकेट लीग जो ऑर्गेनाइज की गई है वैली बॉयज़ क्रिकेट क्लब कुपवारा थोड़ा, और 6 अगस्त से इसका पदार्पण हो रहा है। और इसमें बहुत सारी टीम्स जो है पूल ए, पूल बी, पूल सी में बांटा गया है, इसको पूल डी 4 पूल में बांटा गया है। तो इसका भी बहुत जल्द आमंत्रण होने जा रहा है। जो कि पूल ए की अगर हम बात करें, बट लाइन्स क्रिकेट क्लब कुपवारा, मुकाम यूनाइटेड आबूरा, सिटी क्लब कुपवारा, लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब गुशी, ये पूल ए की टीम होगी। और पूल बी की बात करें, वैली बॉयज़ क्रिकेट क्लब कुपवारा, सिटी बॉयज़ कुपवारा, ईगल स्पोर्ट्स सोहीपोरा और केसीसी रेड। पूल सी में वैली विकिंग्स कारिहामा, और उसके बाद कोचिंग सेंटर कुपवारा, आयमन इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिकेट क्लब, रेबल फोर्स 11। और पूल डी की बात करें, रामहाल रेड्स, एसीसी रेड, सुलकुट रेंजर्स, विक्टोरिया क्रिकेट क्लब कुपवारा। तो ये एक बहुत बड़ी लीग है जो कि शुरू होने जा रही है 6 अगस्त से। और इसका भी सीधा प्रसारण ज़रूर आप देखिएगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। इस लीग का भी सभी मुकाबले जो है अब तक पहुंचेंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 38 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वर्धमान रन गति 4.75, प्रोजेक्टेड स्कोर 95। और इस समय बीच मैदान में समीर और तौसीफ की जोड़ी अबरार पीर ने 4 ओवर में 12 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की। क्या महत्वपूर्ण संघर्षपूर्ण गेंदबाजी का विश्लेषण। Well, credit must be given to the captain leading up front, and this is the whole show produced by the captain. But no doubt about that, bowlers did well. They bowled in the right areas. But the man behind that, all that armory, that potent bowling attack and pace attack, it was the captain leading up front. And he showed the promise in his prolific prospect bowlers. And he allowed Sheikh Junaid to bowl out his score of 4 overs. Then allowed his colleague to bowl out his score of 4 overs. And Abrar Peer and Sheikh Junaid, their combo worked. 38 for the loss of 7. Now it's time for the other bowlers to come and join the party, because others, they are reaping the harvest and they are really feasting in. It's time for the others to join the feast. पारी का 9वां ओवर लेकर पहला परिवर्तन, और ताहिर है गेंदबाज। और अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, हालांकि लपेटने की कोशिश, खड़े खड़े अपनी जगह, लेकिन गेंद और बल्ले का संकर नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 8.1 के बाद 37 विकेट के नुकसान। Well, you know this man, it's Tahir Mir. He is another terrific prospect from Kupwara, and he has now been given the ball, who loves to share the new ball from one hand, and he has been given the ball in the 9th over. This tells the story how terrific Sheikh Junaid and Abrar P were in the over number 9. Here goes, and that's a good shot. And that should run away down to the wide extra cover boundary for look at that one. He goes berserk onto that one, and the ball goes like a tracer bullet all the way down to the boundary. One bounce ball. Score moves to 42 for the loss of 7. Once again, commentators, because we're just praising this one, and he has been taken to the cleaners. But in the meantime, Kupwara Cricket League, organized by Valley Boys Kupwara, coming your way from 6th of August. You join us back for all the fun, the North Kashmir spice and flavor coming your way through JK Sports Time. It's going to be a big league. Kupwara Cricket League will find some big guns locking horns with each other here at the center of gullies of Kupwara. In the meantime, Tahir Mir continues to bowl. He's conceded 4 and is yet to pick a wicket. It's 42 for the loss of 7. We are in over number 9. And Badagam Braves, they are still in with a chance if they manage to battle it out, sweat it out, and they have to make sure that they bat out of the skins at this crucial juncture. It's 42 for the loss of 7. In the meantime, and it will definitely take us some time to bring the ball back, but Nazir going through this Kupwara Cricket League and as sponsors, we will definitely come to that. It will go through the pools. We're talking about the teams which have been distributed in the different pools. And going through that, but dear beloved viewers, don't go anywhere, don't fade away, come back. The match on, the game on here at the Sunday. Don't fade away, come back. It's going to be a nail biter. Don't fade away. Still a long way to go in this match. It is still evenly poised and stands tall on to the chance of a run out. Directed. Would have been in trouble, but on that occasion that Vivod Shai comes in, save with the batsman. In the meantime, we're going through the Kupwara Cricket League, organized by Valley Boys Club Kupwara.
We got a Pool A, Pool B, Pool C and Pool D. Pool A, Bat Lions Cricket Club Kupwara, Mokam United Aura, C Club Kupwara, Lodge Cricket Club Gushi, Dolo Pool D, Valley Boys Cricket Club Kupwara, City Boys Kupwara, Eagle Sports KCC Reds, Pool C Valley, Viking Skarihama Coaching Centre, Airman Cricket Electronic Cricket Club and Rebel Force. And going through the Pool D before, and that's a good ball, that's a dot ball outside the upstream batsman, unable to latch on to that one. Pool D, Ramhall Reds, HCC Reds, Sulkut Rangers and Victoria Cricket Club Kupwara will provide the these are the teams which will be locking on, and JK Sports Time and Ramhall Cricket Ramhall will be providing the live broadcast of each and every match from this very beautiful and a mesmerizing centre of sport. That's a good ball. And Valley Boys Kupwara, behind that Kupwara Cricket League, Zion Construction Mead Computers and Media City Salmot. And there are so many other sponsors. It will take us some time to going through that very line, and we will definitely come to that. But we would definitely love to thank Orco Fenestration, followed by Anthem Sports India, Fashion Feast, the Shining Star Pumper, Real Estate Pumper, MHM, multi-fashion branded store. In the meantime, where are you going away? Where are you fading away? It's time to entertain. It's time to join the live broadcast and watch these wonderful vibes. And oh, that was in the air. What could have been a blinder of a catch? But it evades the fielder down towards the voidish extra cover region, will get a single nonetheless. 43 for the loss of 7. Nazir coming back to the game of glorious uncertainties here at the centre. It is 43 for the loss of 7. We were in over number 9. 9 done. It's 43 for the loss of 7. From here on, I think so that Badagam are trying to bounce back in this match. They have got a lot of areas to work on, but they can still announce themselves that we are back into the game. 44 पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद और जहां पर आत्मविश्वास संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। एक साझेदारी की आवश्यकता है। 11 ओवर का खेल अभी भी बचा है, हालांकि अभी भी काफी लंबा सफर उन्हें तय कर रहा है। यहां से एक साझेदारी यदि पनपती है तौसीफ और समीर द्वारा 30-40 रनों की, तो मैं समझता हूं सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे से क्रिकेट के समर्थक की संख्या इस मुकाबले में बढ़ती हुई, और यहाँ जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़ जाइए हमारे साथ। क्रिकेट का ये खूबसूरत और संघर्ष पूर्ण मुकाबला जो कि केपीएल के अंतर्गत दूसरा सत्र वर्ष 2022 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो कि बडगाम ब्रेव्स और कुपवारा के विरुद्ध चलता हुआ इस गालिजू के खूबसूरत मैदान में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस निर्णायक मुकाबले में बडगाम की टीम संकट की स्थिति में 44 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पूरे हो चुके हैं। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन और पारी का 10वां ओवर लेकर के स्पिन आक्रमण संभवतः पहली बार देखने को मिल रहा है, और किस प्रकार से वे गेंदबाजी करेंगे सामने है समीर। रईस के लिए अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, अंतिम समय में उसको रईस जो कि गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए, और उनके सामने है समीर। 44 पे 7 9.1 के बाद हालांकि शांत धीमा क्रिकेट, लेकिन आशा की जा रही है खूबसूरत और आकर्षक मुकाबला देखने को मिले इस ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर के खेला उसको जरूर, हालांकि काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां पर क्षेत्र रक्षण को, जब तक उसको फील्ड किया जाता। चहलकदमी करते हैं 1 रन और अच्छी रणनीति अगर इस प्रकार से आप स्कोर बोर्ड को गतिशील रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक दबाव की स्थिति है वो अपने आप छटती है बल्लेबाजों से। Well, exactly. You have to make sure that you knock the ball in the gaps and stuck to the basics. Keep rotating the strike. That will relieve the pressure from your shoulders, and you can ease up a bit. At this crucial juncture, you need to ease up a bit, and you need to create that sort of an environment around yourselves that you can really bat easily. And we saw that there was some instant in the game that we saw the test field were brought in by the captain because of those tactics used by the batters. They were just playing onto the back foot, and they were just showing that they're playing the 5th day of the test match, and they were saving the last session to save the test match. जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत। उसी प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। 45 7 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर, यानी कि आधी पारी समाप्त होने को है। लेकिन अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 विकेट गंवा चुकी है टीम। अगर बात करें बडगाम की 47 इस बार रईस किए गए लेग स्टंप पर, और बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद दर्शक वीरगांव में जा लगी है 6 रनों के लिए, और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हैं बडगाम के 51 7 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर में। Well, Nazir, that was a wonderful shot, swept and in the aerial and all the way. That's gone, not a country mile, but at least we can say some 10 rows back onto that portion of scale. Like 6 more, 50 comes up. It's 51 for the loss of 7. Now something is happening and coming their way. This is cricket for you. Don't go anywhere. Don't fade away, dear blood weavers. Come back. It's game on here at the center. And Samar and Tosip says, game on. We are here at the
batting strip. Oh, slogs that one. Will this find the boundary? No, doesn't. It finds the fielder there at Kokon area. Will get a single nonetheless. Score moves to 52 for the loss of 7. 51 विकेट के नुकसान पर 9.3 के बाद तौसीफ और समर की जोड़ी समय बीच मैदान में। समर जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं और कहना चाहिए अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। जिस शैली के बल्लेबाज हैं समर, आज उस शैली के अनुरूप खेलना होगा। क्या उसमें सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं? जिस बार फिर बैकफुट पर जाकर के खेला, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 56 विकेट के नुकसान पर। और समर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, लेकिन आज इन परिस्थितियों में जिस शैली के बल्लेबाज है, जो प्रतिभा उनमें है, उसको आज दर्शाना होगा। इस संकट से टीम को निकालना होगा और आज उनकी एक कड़ी परीक्षा होने जा रही है ऐसे समय में जबकि टीम संकट में डूबी हुई है बडगाम की। You were talking about that. It's a testing time. It's a litmus test. But look at Ray Spear. He has conceded 12 so far in this over. He's under the serious hammer. Next ball, that's a good ball. Beaten all ends up. Whenever we talk of the bowler being brutally attacked and he comes alive, he lives up to his expectations. Why is this case with our commentary? It is a kind of a term we use, commentators curse time and again. Whenever we praise any bowler, he's taken to the cleaners, and whenever we praise any bat, he also gets undone with the next ball, and that is the case which is happening. But at the moment, Sabar and Tausif, these are the two wonderful batters out in the middle, and these are the batters. This combo and this partnership is going to be pretty vital, and this is going to play the pivotal role in their innings. We're talking about Badagam Braves. If these two manage to stick to the basics and hang around the crease about next 5 overs, they will definitely set the tone for the good chase. It's 56 for 7, and what Kupwara need at the moment, they need to bounce back. They need a wicket here. They need to break the partnership, but Badagam need a partnership badly. Oh, that's a good ball, and punched, but will find the failure. And in the meantime, both the batters fetch 157 for the loss of 7. We are in over number 11, halfway down. 56 for the loss of 7. Now we are into the 11th over, and this is the final passage of play of the next 10 overs. And the next score of 10 overs are going to come. And it's Tahir who's operating, has conceded 7 of 7 balls, run a ball so far. But Samar and Tausif, these are the two batters out in the middle. Believe me, beloved viewers, everyone is talking about their talent, their class. They're really possessing some serious talent. Let's wait and watch alongside us on JG Sports Time. इस ओवर में अगली बार ये गेंद अच्छी गेंद इस बार उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद उपेक्षा से ज्यादा, हालांकि कल्पना वहां पर नहीं की थी बल्लेबाज ने, और गेंद वहां पर सीधे चकाती हुई बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्ताने में। स्कोर अभी भी टिका हुआ 57 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर प्रगति पर 10.2 के बाद समर और तौसीफ की जोड़ी, और काफी कुछ निर्भर करेगा। एक अच्छी जोड़ी है, मान्यता प्राप्त, और इनमें क्षमता भी है बड़े स्ट्रोक से लेने की। और जिस प्रकार से समर की बात की जाए तो बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन हार फिलहाल का उनका रहा है, लेकिन ऐसे में यहाँ पे आवश्यकता है संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करें और बेहतरीन तरीके से अपनी उस कला का प्रयोग करें, और आने वाले समय में बडगाम के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और बिल्कुल लोसी मुद्रा में दोनों बल्लेबाज, हालांकि इस समय बीच मैदान में मंत्रणा चलती हुई समर और तौसीफ द्वारा। तौसीफ 15 पे नाबाद 11 गेंदों का सामना किया और समर 6 पे नाबाद 5 गेंदों का सामना किया। 57 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में बडगाम ब्रेव्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते इस निर्णायक मुकाबले में, जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला कश्मीर प्रीमियर लीग सत्र 2 वर्ष 2022 के अंतर्गत गलीजों के इस खूबसूरत मैदान में चलता हुआ। इस ओवर में अगली बार ताहिर मीर, ये गेंद और इस बार जबरदस्त प्रहार, क्या बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। And as you look at that one, Tahir Mir can't believe, but this is a kind of a nightmare. And that's gone. It's absolute carnage. And both the batters announce themselves. That's what we want. That's what beloved viewers would definitely love to entertain themselves with this wonderful batting package coming their way. It's time to join JG Sports Time. The two batters are going dynamite. In the meantime, Tahir Mir next ball without any slip. And that's a good ball. And waited for the arrival of the ball. And stands tall, but not happy with himself. He replicates what should have been done. He was trying to clip that one, but was unable to do that because of that moisture in the track. But the second inning, the pitch will get a lot better from inning number 1, isn't it?
हाँ, मैं आपकी बात से सहमत और पहली बार इसमें वर्धमान रन गति 6 तक का पहुंचती हुई 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगति पर ताहिर मीर की गेंद इस बार अंतिम समय में सिर्फ दिशा भर दे दी, वहां पर क्षेत्र रक्षण करने की कोशिश चूके, लेकिन जब तक साथी खिलाड़ी उसको बैकअप करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ समर के और कुल योग पहुंचा 64 रन 11वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर। समर और तौसीफ काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे और इन दोनों बल्लेबाजों में वो क्षमता है, वो कला है कि एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं और बिल्कुल यहाँ पे संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन देना होगा ऐसे समय में जबकि टीम की नैया संकट की स्थिति में डूबी हुई और वहां से प्रयोग करना होगा समर और उनके साथी खिलाड़ी तौसीफ को। 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगति पर ताहिर हैं गेंदबाज ताहिर मीर और उनके सामने है संभवतः तौसीफ बारी बरखम शरीर के मालिक उनके लिए गेंद उस बार फिर बल्ला चलाया, हालांकि गेंद के लाइन पे नहीं गए, अंतिम समय तक गेंद पे नजरें रखनी होगी और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे। कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती थी बल्लेबाज पे, क्योंकि आप ऐसे समय में बल्लेबाजी कर रहे हैं जबकि परिस्थितियों में आपको एक साझेदारी की आवश्यकता है और बिल्कुल उसी प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करनी होगी। समर और तौसीफ इस समय बीच मैदान में कुछ मंत्रणा चलती हुई कि किस प्रकार से किस रणनीति से यहां से बल्लेबाजी करनी होगी। 9 ओवर का खेल बचा है, 11 ओवर हो चुके हैं पूरे, 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर 5.73 प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बनाए हैं। It's time for the strategic timeout here at the Santa Nazir. We are halfway down. We are 11 overs down into the match. Nazir, 11 overs down, where we were talking about that winning the toss and opting to bat first. But that was the reason why he decided to bat first. Captain knows better than we people that what kind of a team he has brought on, but today he has really these two batters are proving their captain right. But look at these two batters, things eased up a bit and they are taking the full toll of every bad ball, and now they're setting the tone for the good chase. It is 63 for the loss of 7. We're a long way to go, but Kupwara, if they manage to get a wicket here, that means partnership is broken, and that will definitely put Kupwara in ascendancy and they will be back into the match. But the cricket, the beauty of the game of glorious uncertainties, the ebbs and the flaws of the game. This is really unbelievable game of glorious uncertainties, based on the principle of glorious uncertainty. It tells the entire story, how brutal it can be and how good it can be on a given day. But today it's really been a nightmare for the top order of Badagam Braves, then followed by the middle order batters. They have been castled, they have been sent packing. But look at this pair, and they're trying to come back and launch the counter-attack. And this can be the nightmare for the bowling side of Kupwara. But it is the testing time for the Kupwara side to bounce back and to bowl in the right areas and to not give an inch away. Keep bowling in that corridor of uncertainty, the way Abrar Peer and his colleague Sheikh Junaid bowl in that corridor of uncertainty. And they kept the batsman guessing whether this one will come inside the batter or it's going to move away from the batsman. But at this crucial juncture, the cricket is coming alive, and our blood viewers are hereby request to come back, hop tabs this way, and find out a fizzled campaign of cricket here at the centre. We got the two batters out in the middle of Samar and Tawsif, and this is going to be the combo, and that can really take their side to some sort of respectability, and they can really set the tone for the good chase. 11 ओवर की समाप्ति के बाद 63 विकेट के नुकसान पर बडगाम ब्रेव्स का स्कोर 5.73 प्रति ओवर के हिसाब से समर और तौसीफ की जोड़ी बीच मैदान में काफी कुछ निर्भर करेगा। और एक बात यहां पर और स्पष्ट कर दे कि जिस शैली के बल्लेबाज है समर, हालांकि 7 विकेट गिरने के बाद उनका आमंत्रण हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो इतना काफी देर से उनका आना मैं समझता हूँ ये भी एक विलंब हो सकता है इस मुकाबले का। Well, exactly. I earlier on thought out that they have got a certain kind of lineup for this match. They got the depth in the batting, and the captain was trying to exhibit that I got a wonderful side, a young bunch of talented batters in my lineup, and I have a very good compact batting lineup. They were definitely going to show the composure, but it comes down to these two batters. So that means there is still a lot more batting to come, and we are in for a good game, and we are in for a crackerjack of an encounter. Come this way and hop taps this way, find out a big match underway here at the Sunday. The defending champions are locking horns with Kupwara Flies. They were up to flyer in terms of the start they got. We're talking about the Kupwara. They got 7 batters in 40s, then followed by this show. And this is the belatedly counter-attack which is going on.
and they have been able to prosper to 63 and propel to 63, but there is still long way to go, and I believe that with 9 overs to go, 150 is still on cards. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत। और इस समय स्थिति यह है कि पानी के विश्राम के बाद मुकाबला शुरू होता हुआ। I want to interrupt you. My colleague Asif sir were talking about that. Still 150 is manageable, is still possible. And then look at that one. It is 63 for the loss of 7. 63 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर पूरे हो चुके हैं। तौसीफ और समर की जोड़ी बीच मैदान में। समर 12 पे नाबाद 10 गेंदों का सामना किया और फैसल के हाथ में हवा पर गेंदबाजी। तौसीफ ने अभी तक 16 रन बनाए हैं पहली गेंद, और 12 अच्छी गेंद। अंतिम समय तक गेंद के आने का इंतजार किया और सिर्फ दिशा भर दे दी और 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 11.1 के बाद बडगाम ब्रेव्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं निर्णायक मुकाबले में। खूबसूरत और ऐतिहासिक मुकाबला। आइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़ जाइए और मजा लीजिए इस खूबसूरत मुकाबले का। इस समय बीच मैदान में संघर्षपूर्ण मुकाबला, क्रिकेट के महायुद्ध इस समय बीच मैदान में चलते हुए। गाली झुका यह खूबसूरत मैदान और गेंदबाजी का दायित्व फैसल के पास। इस बार लेग स्टंप पर हल्के से उसको मोड़ा, हालांकि ये देखते खिलाड़ी काफी पीछे और गेंद तब तक सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक और 4 रन खाते में जुड़ते हुए 68 विकेट के नुकसान पर। Najir, that is a leg glance off his hips and worked away in style. Aerial, one bounce into the boundary, and this is what Samar and Tausif has got for all of us in its kitty. So join this wonderful coverage. Come this way and let's find it out yourselves. Look at Samar and Tausif. They are setting things ablaze. But that has really been a wonderful shot of international stature and worked away in style off his hips. Next ball goes and goes once again in the Sam direction. And Sam result nailed down. Fairly comes around on that occasion and manages to cut it off. But not in time. The two batters scamper through for a quick single. Well, the Big Bash. A Big Bash cricket tournament, Vathura Badagam, is coming up. They have few entries left, and those who want to be part of that very big league should call Riyaz Speed. And we were talking about that great athlete from Badagam. And in the meantime, next ball goes and goes and clipped away. And the call is for the 2, but they will still for just a single, and score moves to 70 for the loss of 7. We are in over number 12. Well, Big Bash cricket tournament Vathura is coming your way. That tournament will also be brought to you live and exclusively through JK Sports Time. Nazir, it's time for you to carry on 70 for 7. 77 विकेट के नुकसान पर 11.4 के बाद तौसीफ और सबर की जोड़ी बीच मैदान में। इस ओवर में अगली बार गति में परिवर्तन, लेकिन पहले से बांप लिया था। खेला जरूर रन लेने की कोशिश, लेकिन मना किया। नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे समर को वापस भेजा सुरक्षित अपनी क्रीज में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 77 विकेट के नुकसान पे। 11.5 के बाद बडगाम ब्रेव्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते निर्णायक मुकाबले में, और क्रिकेट के अनुकूल वातावरण इस समय बीच मैदान में यह मुकाबला संघर्षपूर्ण चलता है। इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप पर, उसको खेला जरूर लेग साइड में जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के लिए, और 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 71 विकेट के नुकसान पर। बिग बैश वथुरा, जो कि एक बहुत बड़ी लीग का हाल फिलहाल में आयोजन होने जा रहा है, सफल प्रतियोगिता, और उसमें कुछ स्थान अभी स्थान खाली है। तो ऐसे में क्रिकेट के जो भी इस लीग में हिस्सा लेने वाले हों, इस टीम में अपनी टीम को वहां पे सम्मानित करना चाहते हो, वे कांटेक्ट कर सकते हैं वहां के ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से। और एक बहुत बड़ी लीग का सफल आयोजन होने जा रहा है आने वाले समय में, और उसका भी सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस मुकाबले की अगर बात करें, 71 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर पूरे हो चुके हैं। 8 ओवर का खेल बचा है। समर और तौसीफ की जोड़ी से बीच मैदान में प्रयास करते भी, लेकिन कहना चाहिए जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान, और स्कोर बोर्ड को भी सिंगल्स डबल्स के साथ गतिशील रखते हुए, और कहना चाहिए ये एक महत्वपूर्ण स्थिति और ऐसे समय में इस प्रकार की आवश्यकता थी जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में संघर्ष करते हुए इस गेंदबाजी के विरुद्ध। 12 ओवर 71 विकेट के नुकसान पर 5.92 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं। और फैसल जो कि गेंदबाजी के लिए इस बार पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक, और गेंद दूर उस छोर सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। And it says ran go away. It is time for Tausif to carry on and to send the ball out of the park into the orbit. Over long off, 6 more. Even a miss it carries the distance. That was a miss it. That didn't come up the middle. That didn't middle. And still it manages to evade the field and almost 10 rows back. 6 more.
77 हो गया है कुल योग 7 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर प्रगति पर और तौसीफ 27 पे 16 गेंदों का सामना किया इस बार। अगली गेंद को खेला, हालांकि खेलना चाहते थे, गेंद ऊपरी सिरे पे लगने के बाद वहां पर कोई गलती नहीं, फील्डर से लपक लिया और जिसकी कि हम चर्चा कर रहे थे अंततः वही हुआ। 8वें विकेट का पतन होता हुआ 77 पे 8 13वें ओवर में। Well, this is really heartfelting. Look at the man, he's down on the ground. He doesn't want to leave the sand, but he has to walk back. This is the natural law. And the Kupwarians, they were under the serious hammer. They're coming alive once again. They're pumped up as they got rid of the danger man. And Tausif doesn't want to leave. But gentlemen, you have to walk back to the pavilion. But that is a big blunder, and this is a big loss for Badagam Braves and Kupwarians. Nazir, they're breathing again. They're back into the match. From here on, they should try to wrap up things as early as possible. एक बार फिर जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूवर्स का स्वागत करना चाहेंगे, अभिवादन करना चाहेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार और लाइक और शेयर करना ना भूले। जुड़ जाइए हमारे साथ। संघर्षपूर्ण मुकाबला, क्रिकेट की महानता इस समय बीच मैदान में दर्शती हुई केपीएल के अंतर्गत दूसरा सत्र वर्ष 2022 के अंतर्गत ये मुकाबला चलता हुआ और प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम, आर्को फेनेस्ट्रेशन, रियल एस्टेट पंप और फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से समर्थन और सहयोग दिया है जेके स्पोर्ट्स टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय स्थिति 77 पे 8। और एक बार फिर जितने भी खेल जगत के जितने भी चाहने वाले हैं और उनको जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से बताता चलूं कि बिग बैश कप मथुरा जो कि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी लीग का आयोजन होने जा रहा है, वहां पे कुछ स्थान खाली पड़े हैं और ऐसे में जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, जो भी टीम्स उसमें हिस्सा लेना चाहती हो, वे जल्द से जल्द रियाज साहब के साथ कांटेक्ट करें और वो खाली पड़े स्थान को फिलअप करने की कोशिश की जा रही है। और इसी प्रकार से अगर बात करें इस मुकाबले की तो इस समय स्थिति 77 8 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद शकील लाए हैं नए बल्लेबाज और उनको भरपूर सहयोग करना होगा समर का, जो कि 14 पे नाबाद है 12 गेंदों के सामना करने के लिए। Well, Badagam Braves still breathing because Samar is out in the middle. He's on to 14 of 12 balls and Shakil joins Samar. And umpire says, gentlemen, go back to the top of your bowling mark. You will have to reload and you have to rebuild that one. 77 for the loss of 8. Here goes. Oh, way down the leg side. Umpire signals it's a wide. Score moves to 78 for the loss of 8. We are in over number 13 of the match. Nazir, Shakil and Samar, they need to put their heads down, stitch up on a ship and try to study the ship. At the moment, ship is in a kind of a boisterous challenge. It's midway. It is within the tides of the sea. And those tides, those boisterous and those ferocious waves, those currents of the sea are trying to keep this one under check and they want to submerge it. But at the moment, these two, they need to try their level best and take this side to some sort of respectability. Next ball goes and oh, that's a good ball, but equally to the task Samar. And look at this man, he's really possessing some talent. We can't take that credit away from this man. He's really been a serious prospect. But look at that one. That is a wonderful delivery coming into the batsman, and he manages to block that one back to the bowler. और ये इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी कला है, उस कला के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। इस बार लेग साइड में मोड़ा और बहुत ही बेहतरीन गैप्स का इस्तेमाल करता है। ये देखते हैं कि खिलाड़ी थोड़ा पीछे है, धकेला गेंद को और तेज दौड़ के बीच दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम दोनों बल्लेबाजों की, और एक अतिरिक्त दबाव ऐसे में इन 2 रनों से छटता हुआ 2 रन और खाते में बढ़ते हुए 81 8 विकेट के नुकसान पर समर और शकील की जोड़ी बीच मैदान में अंत तक रहना होगा। यदि पूरे 20 ओवर खेलते हैं तो मैं समझता हूं 130 140 अवश्य होगा। One short, it is 80 for the loss of 8. 12.4 balls done. Next ball to Samar, and Samar drives that one, and he wanted to cover drive. That one doesn't get to the pitch of the ball. Nonetheless, will get a single, and score moves to 81 for the loss of 8 after 13 overs, 7 overs remaining. Look at Samar. He's replicating what should have been done and what he should have executed. And how he should have executed his shot to perfection. He's replicating that. He should have practicing that, but nothing can be done. It has been done and dusted on the occasion, and that wasn't quite middle, but nonetheless that yielded a single, and score is 81 for the loss of 8 after 13 overs. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, Anthem Sports India Fashion Fiesta, Shining Star Pump, Real Estate Pump, and MHM Multi-Fashion Branded Store, Agricola and Magam, opposite Indian Oil Petrol Pump. In the meantime, Badagam Braves, the 81 for the loss of 8. Current run rate is 6.23, and project score says if they manage to carry on at the same pace, at the same rate,
they can finish on 100 and quarter 50. That means 125. 13 ओवर समाप्ति 81 पे 8 रईस के पहले इस ओवर की पहली गेंद को ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेल दिया और गेंद एक बाउंस के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए. That was a helicopter shot and that yielded a boundary, 85 for the loss of 8. Over number 14 and Ray Spear welcomed with a boundary. He has conceded 16 so far in his score of 1.1 ball with 1 slip in place, curves and bows. And turning further, a wide signal by umpire. Score moves to 86 for the loss of 8. Wherein over number 14 of the match, Ray Spear under the serious hammer goes again. Leg spinner goes and bows. Oh, turning into the batsman and worked away, clipped away. They're going to come back for the second. No, doesn't. And the batsman decides to settle for a single. 87 for the loss of 8. 87 रन 8 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 4वां ओवर प्रगति पर. समर 19 पे नाबाद 15 गेंदों का सामना किया और शकील साथ दे रहे हैं 2 रनों पे 2 गेंदों का सामना किया. इस ओवर में अगली बार रईस उनकी ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर जगह बनाते हुए खेला, लेकिन उस ओर खिलाड़ी हैं तैनात. जब तक उसको फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, विकेट कीपर के दस्ताने में पर्याप्त समय था 1 रन लेने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता. 87 रन 4वें ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बडगाम ब्रेव्स बमुकाबला कुपवारा, जो कि इस समय क्वार्टर फाइनल मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ गालीजू कुपवारा के इस खूबसूरत मैदान में जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ और सभी व्यूवर्स का, चाहते व्यूवर्स का बहुत बहुत आभारी पूरी कमेंट्री टीम द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है. इस बार गति में परिवर्तन, पहले से बाप लिया था लेकिन अपने स्ट्रोक से नाखुश है वहां पर समर. हालांकि रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया. स्कोर अभी भी टिका हुआ 86. 8 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 4वां ओवर प्रगति पर. शकील जो कि समय नानसा की छोड़ पर इस बार कदमों का इस्तेमाल और गिलियां बिखेर दे. वहां पे कहना चाहिए कि वहां पर सुरक्षित अथवा क्रीज में है अथवा ये स्टंप्स करार दिए गए हैं. हालांकि विकेट कीपर ने वहां पे अपील जरूर की थी, गिलियां बिखेर दे थे, लेकिन अंपायर पर संभवतः इसका कोई प्रभाव नहीं. और जी हां, सुरक्षित है, नाबाद है कर इस पर और बाल बचे वहां पर समर. और ऐसे समय में इस प्रकार का अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना होगा समर को, क्योंकि अभी भी इसके बाद 6 ओवर का आना बाकी है. अंत तक रहना होगा और यहां से वे 140-150 तक पहुंच सकते हैं. इस बार अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक. 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. एक और दर्शनीय स्ट्रोक, गैप का बेहतरीन इस्तेमाल, लाजवाब टाइमिंग के साथ 4 रन और खाते में जुड़ते 91 हो गया है 8 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद. Pulled and belted for 4. 91 for the loss of 8 after 14 overs. Another expensive over comes to an end. But in that over, there was a confusion created by the wicketkeeper appealing for the stumping. But I think that was a good decision in the end by the umpire. 91 for the loss of 8. We're in over number 15 of the match. Now it's the testing time for the captain to come up with new tactics to deny the batting side any freebie from here on. And they have been able to prosper to 91 and propel to 91. And that tells how brutal and how hurting it can be. I'm talking of cricket. And it's totally a different game. And it doesn't work as you want. It works against you. And that's a good shot. And we'll have to wait and watch. And that has gone down towards the longer fringe. And that was a wonderful shot, handsomely driven by Samar on that occasion. And that was a superb shot of drive and right through the bowler. And down towards the longer fringe and yielded a single, 92 for the loss of 8, and brings Shakil on strike. And Kupwara side, they need to try their level best if the strike is given back to his colleague Shakil, and they need to bowl some extraordinary deliveries, Nazir, to Shakil and try to castle him. And that's where they can bounce back, and that's where they can dent to the confidence. And from other side there is Samar. He won't let you go on top. He will definitely keep you under check. 17 गेंदों से 24 रन बनाकर नाबाद है समर और उनका सहयोग दे रहे हैं शकील, जो कि इस समय 6 गेंदों पर संभवतः 5 रन बनाकर नाबाद है. कुल योग 93. 8 विकेट के नुकसान पर 14.1 के बाद. और गेंदबाजी का दायित्व
शब्बीर के पास। शब्बीर है गेंदबाज और काफी कुछ देर पर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि यदि पूरे 20 ओवर तक इन दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी, अंत तक रहना होगा और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है बडगाम ब्रेव्स की टीम कुपवारा के विरुद्ध। आकर्षक मुकाबला, संघर्षपूर्ण, और जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद लीजिए। बैकफुट पर जाकर के अच्छी गेंद, वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से काफी आगे निकल चुके थे समर, लेकिन मना किया वहां पर शकील ने, वापस सुरक्षित अपनी क्रीज पे भेजा। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 93, 8 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 15वां ओवर इस समय प्रगति पर। वर्तमान रन गति 6.49 और इस बार ये गेंद लेग साइड में मोड़ा, 2 खिलाड़ी हैं उसके पीछे, जब तक उसको फील्ड किया जाता, 1 रन पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, और 1 रन के साथ ही कुल योग बडगाम का 94, 8 विकेट के नुकसान पर। और पारी का ये 15वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाजी का दायित्व शब्बीर के पास। शकील 6 पे नाबाद 8 गेंदों का सामना किया, और वही समर 24 पे सामना करने के लिए अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर के बैट और पैड मिलाकर सम्मानजनक रूप से खेला, खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया बगैर किसी रन के। 94, 8 विकेट के नुकसान पर संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में। अच्छी साझेदारी पनपती इस बार, अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी इस क्षेत्ररक्षण की कम, और निश्चित तौर पे यहाँ पे कुछ रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और कुल योग पहुंचा 95, 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद संभव 23 ओवर की होगी पारी का 15 ओवर लेकर के, और गेंदबाजी का दायित्व शब्बीर के पास। इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद, और इस बार खेला जरूर बैकफुट पर जाकर के, हालांकि हल्की सी लेकिन खिलाड़ी थोड़ा पीछे। ओवर पूरा हुआ, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 95 पे 8। बडगाम ब्रेव्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जो कि बीच मैदान में इस गालेजू के खूबसूरत मैदान में चलता हुआ। और कहना चाहिए कि 5 ओवर का खेल बचा है। समर 25 और उनका साथ दे रहे हैं शकील। $95 for the loss of 8 after 15 overs. Still the match is alive. 150 is on course. 5 overs to go. And Taimir is going to bowl. Shabir bowled 2 overs. 1 for 14. That's really been a wonderful bowling from his side. But the 2 batters out in the middle, Shakil and Samar. Samar on to quarter 50 of 25, 19 bowls. And equally spotted by Shakil. He's on to 6 of 9 bowls. Arc of fenestration behind the live coverage. Anthem Sports India Fashion Feast, Shining Star Pompo and amateur. 95 पे 8, 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। 5 ओवर का खेल बचा है। शकील और समर की जोड़ी बीच मैदान में, और कहना चाहिए कि धीरे धीरे से यदि ये आखिरी के 5 ओवर खेलते हैं, अंत तक खेलते हैं इस पूरी पारी में, तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए 140, 150 अवश्य होगा। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों को एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। किस प्रकार से वो यहाँ से योजनाबद्ध तरीके से, किस रणनीति के तहत गेंदबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। उधर जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर से निवेदन होगा कि आइए और जुड़ जाइए इस खूबसूरत और कांटे की टक्कर के मुकाबले का, जो कि इस समय बीच मैदान में चलता हुआ एक भिड़ंत होती हुई और क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक समय में 37 पे 5 और इस समय 95 पे 8। 95 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का 16वां ओवर लेकर के तैयार इस ओवर में, और सामने वहां पर दोनों बल्लेबाज इस समय हेलमेट पहने हुए, और क्रिकेट के नियम के हिसाब से भी क्रिकेट के नियम का पालन करना होगा, क्योंकि ऐसे समय में आज हर क्षेत्र में अगर हम बात करें, क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चली है, तो ऐसे में चोटिल रहने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, और इस बार बैकफुट पर जाकर के खेला, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और कहना चाहिए कि वहाँ पर रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 95, 8 विकेट के नुकसान पर 15.1 के बाद। वर्तमान रन गति की बात करें 6.26, और इसी प्रकार से इसी रन गति से रन बनाते रहे तो 125 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। समर अभी तक डटे हुए करे इस बार, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। इस ओवर में अगली बार, इस बार जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, पूरी तरह से छकाया, और गेंद वहां पर स्टंप्स पे जा लगे। 9वां विकेट गिरता हुआ मात्र 95 पे। And this is a big wicket, and the big fish caught in the net. Badagam Braves, the last wicket number 9. And it's time for the Kupwara team to celebrate, and the celebration time begins in their hurdle, and that's the high time, that is the big time to celebrate. And this is wicket number 9, that too of the set batsman. It was summer to depart, and that will definitely bring the momentum back to Kupwara Flies. And there again,
flying with the flying colours. They're coming out with the flying colours, and at the moment they're really on cloud 9. 9 down, it's 95. And we are in over number 16, and now Kupwara bounced back in style. And can they wrap up? Nazir, what do you think? To me, if the two batters, now the tail is in, it is down to these two batters, Shakil and Feroz. If Feroz and Shabir manage to bat out next 5 overs, they can manage to get to 130 or beyond 125 to me. But in the meantime, I have another suggestion and I have another point to point out is that, and Kupwara would definitely love to wrap up as things as early as possible, but I still believe that it is a 50-50 if they manage to bat out. But to me, I will go with the Kupwara side. They can really restrict to them in around 100. What's your take on that? मैं आपकी बात से सहमत हूं, जरूर इस पर चर्चा करेंगे। 95 पे 9, ये 16वां ओवर प्रगति पर है और इस समय आखिरी छोड़ी बीच मैदान में गेंदबाजी का दायित्व ताहिर के पास। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद आवश्यकता के गलियारे में फेंकी हुई और ऐसे तैसे करके उसको निकाला वहां पर बल्लेबाज ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 95 पे 9। Well, Nazir, another point made out by our colleague, our brother here in the com box. That's a great sort of observation that the wicket isn't playing well. And we're just talking about the moisture that is still playing it a spoil sport, and wicket has not only realized it, but that moisture has realized it. I have a role to play, and that's why he believes that even 110 can be a defendable one, and it can be a tricky one. And don't say that. Don't make early prediction that Kupwara will definitely run away with the scorecard, but there's a long way to go in this match. Still wait, stay back and watch the match under your eyes. Even 110 can be a tricky one, can be defendable one on this very track, which looks threatening in terms of the bowling. Bowlers are doing a lot better. If Badagam possess that sort of potent pace attack, they can really deny Kupwarians any freebie in this match. इस ओवर में अगली बार ताहिर मीर और उनके सामने है आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। अंतिम समय में गेंद को हालांकि सिर्फ बल्ले से टकराने पर दिया, वही पास में लुढ़की और बगैर किसी रन के 96 9 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर प्रगति पर। अरे जिस प्रकार से बात हो रही थी इस मुकाबले की, इस विकेट की और क्रिकेट के अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो विकेट ने जिस प्रकार से दर्शाया कि आसान नहीं रहेगा इस विकेट पे खेलना, हालांकि बल्लेबाजी के लिए उतनी अनुकूल विकेट नहीं है। दूसरी पारी में आसान नहीं रहेगा। अगर आप 110 120 का लक्ष्य खड़ा करते हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं तो आसान नहीं होगा दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद सीधी रहती थी विकेट कीपर के दस्ताने में। 120 130 तक का पहुंचना होगा। अगर यहां से अंतिम ओवर तक खेलते हैं तो कहीं ना कहीं 120 125 आवश्यक होगा, लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों की कोशिश होगी जल्द से जल्द इस पारी को समेटें और अपने लिए एक न्यूनतम लक्ष्य रखें। और जिस प्रकार से क्रिकेट के एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि दूसरी पारी में आसान नहीं रहेगा। अगर आप सटीक लाइन और लेंथ के साथ और बल्लेबाजों को वहां पर ललचाएं, मजबूर करें गलत स्ट्रोक खेलने के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं आप इस मुकाबले में हालांकि एक रोमांचक स्थिति आ सकती है, भले ही नाम कुछ भी हो, लेकिन कहना चाहिए कि दूसरी पारी में भी विकेट पे बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा। और इसके साथ ही ओवर समाप्ति पूरा हुआ। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 96 9 विकेट के नुकसान पर बीच मैदान में नाबाद शकील 6 पे और उनका साथ दे रहे हैं फेरोज, जिन्हें क्या भी अपना खाता खोलना है बडगाम ब्रेव्स की ओर से। Well, Nazir, the drooping shoulders of Badagam Braves, they believe that they are still 10 to 15 runs short. But to me, I also agree with that statement. But this pitch is possessing some seriousness in its surface, and that can really set the tone for the good chase. We're not talking about that score can make things evenly poised, but the wicket, the given track, the batting strip of Gullies Kupwara will definitely set things in balance, and evenly poised will be the chase. So don't go anywhere, don't fade away, come back. It's going to be a nail biter. So don't fade away, and it will be a match where I'm going to use the word nail to perfection. जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संघर्षपूर्ण कांटे की टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा आशा की जा रही है। क्रिकेट के एक्सपर्ट का मानना है कि दूसरी पारी में भी इस पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा। तो ऐसे में आशा करते हैं क्रिकेट के समर्थक और दीवाने कि एक खूबसूरत और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिले इस ओवर में अगली बार। इस बार अच्छी गेंद पैड पे लगी, हालांकि हल्का सा प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन उस समय ज्यादा विश्वास पे कम नकारा इसको। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी 96 9 विकेट के नुकसान पर। पारी का 17वां ओवर प्रगति पर। और जिस प्रकार से ये आखिरी जोड़ी बीच मैदान में ऐसे तैसे करके ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे, और जितने ज्यादा रन ये बटोरेंगे उतना अच्छा कहा जा सकता है बडगाम ब्रेव्स के दृष्टिकोण से।
Well, exactly. They need runs. That doesn't matter how they come, but they should get the runs. Whatever comes bowling sideway, they are looking for the runs. And that was outside the offside. That was there to be put away. But that tells what the tail is. It is time for the tail to operate, and that's because of that effect. That's a dot ball. What could have been a boundary? It was a boundary delivery. And a batsman would definitely love to fetch a boundary out of that freebie, that width on offer. But that was a dead ball. Next ball goes and goes. And that's a good ball, and right on top on that one, and plays it back to the bowler for no run. Scoring 96 for the loss of 9. We are in over number 17 of the innings. 96 9 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर पारी का चलता हुआ और गेंदबाजी का दायित्व फैसल के पास। फेरोज और शकील की जोड़ी समय बीच मैदान में। फैसल इस ओवर में अगली बार, और इस बार गेंद को खेला, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा उठी है, नीचे है खिलाड़ी, देखना कैच कर पाता था नहीं जी नहीं, गेंद नो मैन्स लैंड में गिरती थी। हालांकि वहां पर प्रयास जरूर किया था दूसरे रन का, और अब वहां पे मिसफील्ड का नतीजा हाँ ना की स्थिति, लेकिन संभवतः कुछ रन और खाते में जोड़ते हुए बडगाम ब्रेव्स की आखिरी जोड़ी, और प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की ऐसे तैसे करके, और वहां पे स्कोर बढ़ता हुआ। ये 17वां ओवर पारी का चलता हुआ 98 9 विकेट के नुकसान पर शकील और फेरोज की जोड़ी बीच मैदान में। Well, the ball ballooning up in the air of the top edge. Bowler thought that he might get his man, but it wasn't in the end. And somebody, it looks like Sheikh Junaid, told that lost the sight of the ball in that sunlight, and he lost the ball to sunlight, and that was the reason. And I think Tahir Mir has hurt himself while feeling that when he was doing that back up on the occasion, and he has hurt himself, and his middle finger is hurt, and he's feeling the pain at the moment, but we can't do very much. It is kind of a sweltering condition for him right out in the middle. In the meantime, next ball, and puts bat onto it lately, and to me it looked like it was about to make kind of an inroad to the stumps, but he puts bat onto it and blocks it to short extra cover for no run. Score a man 97 for the loss of 9. We are in over number 17. Last ball coming up. Faisal is bowling. He has conceded 9 runs so far. Feroz and Shakil. And this is the pair out in the middle. Goes and bows way down the leg side. It's a wide edition in total. 98 for the loss of 9. Arc of fenestration. Manufacturers of UPVC doors and windows. Behind the coverage, Anthem Sports India. Fashion Feast, the real estate Papur. Shining Star Papur, MHM, multi-fashion, branded store, Agri Clan Maga. 98 इस बार अच्छी गेंद वहां पर, हालांकि अधूरे मन से रह गए, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अंतिम समय में अपना इरादा बदला और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर पूरा हुआ, 17 ओवर समाप्त, 98 पे 9। बडगाम ब्रेव्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में KPL सत्र 2 वर्ष 2022 के अंतर्गत। 98 for the loss of 9. 17 overs done. 18 balls remaining. 18 balls. That means 3 overs. And the physio is onto the ground, and he's taking the quick look of Tahir Mir's finger, and he's working on that. But in the meantime, we're going to get a kind of a breather here in the com box. It is Badagam Braves winning the toss, and their captain opting to bat first. They're 98 for the loss of 9. At one stage, they were 42 for 7. In fact, they were 36 for 7, Nazir. Then followed up. Look at the figure, it's 98, and they're yet to be bundled out. And that is the beauty of the game of glorious uncertainties. And if their batters, and if their tail can manage to bat out the next 3 overs, that will mean they can finish their campaign without getting bowled out, and they can set a good score for the chase. And anything around 100 can be a tricky one, given the certain under the certain circumstances, given the conditions out here at the middle. In the meantime, I would add one more thing. Small and empty totals can be tricky ones. We are often seen on cricket fields how things can change when one side sets a small and a paltry total for other team to chase down, and they are being tempted with those totals, and they lost away in between all of a sudden. And are we in for that kind of a match? Let's wait and watch. But come back. We have a game on here at the Sunday. We have a big match. It's a nail biter, and I believe that, and my colleagues believe that this match will go down to the wire. 98 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी समय बीच मैदान में। 17 ओवर पूरे हो चुके हैं। शकील और फेरोज की जोड़ी समय बीच मैदान में। ताहिर मीर पारी का 18वां लेकर पहली गेंद खेला जरूर, हालांकि निचले सिरे पे लगने के बाद, अंदरूनी किनारे पे लगने पर कहना चाहिए, क्षमा कीजिएगा, और वहां पे दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, और गेंद जब तक फील्ड होकर के आती, विकेट कीपर भी चूके, 2 रन और खाते में जुड़ते हुए, और इसके साथ ही तहरे अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ शतक पूरा हो गया है बडगाम ब्रेव्स का। 109 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में शकील 7 13 पे नाबा 13 गेंदों का सामना किया।
फेरोज को अभी अपना खाता खोलना है। 6 गेंदों का सामना किया, हालांकि पूरी तरह से सहयोग करते हुए अपने साथी खिलाड़ी का। वर्तमान रन गति 5.83, 100 रन 9 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 18वां ओवर प्रगति पर और गेंदबाजी का दायित्व ताहिर मीर के पास, जो कि अब तक एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 16 रन इससे पूर्व दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी, न पितुली कसी भी गेंदबाजी कहना चाहिए। बहुत ही शानदार और विश्वसनीय प्रदर्शन और अच्छी खासी क्रिकेट के समर्थकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई। इस ओवर में अगली बार ये गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन पूरी तरह से छकाया, वहां पर रफ्तार से चकमा दिया बल्लेबाज को और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। निराशाजनक प्रदर्शन रहा आज अगर बल्लेबाजी की बात करें बडगाम की ओर से। हालांकि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी भी देखने को मिली, विकेट का भी कुछ योगदान इसमें ज़रूर रहा, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से क्रिकेट के समर्थक, उनके चाहने वाले आज आशा कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और निराशाजनक प्रदर्शन कुल मिलाकर कहना चाहिए। Well, exactly. Batters failed to produce that talent and they were unable to announce themselves here at the park. But apart from that flop show, these two are trying to battle it out and sweat it out and play out the allotted quote of 20 overs. 109 विकेट के नुकसान पर यह 18वां ओवर इसमें प्रगति पर है और बडगाम ब्रेव्स की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि काफी विलंब से यह मुकाबला शुरू हुआ, वर्षा काफी हुई थी, आउटफील्ड गीला होने के कारण विकेट भी काफी गीली थी, तो ऐसे में अंततः बहुत ही शानदार कार्य किया और लगातार सफल कार्य करने के बाद जो यहाँ के सदस्य हैं उन्होंने इस विकेट को खेल के काबिल बनाया और अंततः यहाँ पे मुकाबला शुरू हुआ। इस समय स्थिति यह है, पहली पारी समापन की ओर बढ़ती हुई। पारी का 18वां ओवर प्रगति पर 100 रन 9 विकेट के नुकसान पर बडगाम ब्रेव्स बमुकाबला कुपवारा फ्लायर्स के विरुद्ध। इस ओवर में अगली बार ताहिर मीर है गेंदबाज और उनके सामने है शकील। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन वहां पे खिलाड़ी था न, हालांकि रन लेने की कोशिश, लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे झपट्टा मारते हुए गेंदबाज क्षेत्र रक्षण क्षमा कीजिएगा उस पर और 1 रन से रोका वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर अभी भी टिका हुआ 100 रन 9 विकेट के नुकसान पर। शकील और फेरोज धीरे धीरे से प्रयास कर रहे हैं कि अंत तक खेला जाए, पूरे 20 ओवर खेले जाएं ताकि 110 तक अवश्य पहुंच सके और एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है इस विकेट पर। इस ओवर में अगली बार फैसल ताहिर मीर, उनकी ये गेंद और इस बार सफलता मिली, लेकिन वहां पे खिलाड़ी है तैनात। जब तक वे गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 101 9 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में। 101 for the loss of 9. We are in over number 18. Last ball coming up. Tahir Mir has picked up a wicket and conceded 17 runs. Still a good bowling from his side and he has been economical in this match. It's 101 for 9. Last ball of 18th over goes and bows. Oh, that was a wonderful Yorker. And it's a no ball and chance of a run out. Oh, and look at that one. Badagam Braves a bundle it out on 102 for the loss of 10 wickets. And that's it. We have for you from inning number 1. It was a no ball, but on a no ball, you can run out the batsman. And that's it. It is 102. So that means Kupwara will need 103 runs to register victory and to advance to the semis of Kashmir Premier League Edition 2. And we shall be back in a while with the chase of Kupwara Flies. They need 103 to win this match and to advance to the semis. We shall be back in a short while from now. Join us back for the chase in a while. Till then, take care of your good self and do remember all of us and our technical team and technical support in your prayers. And we shall be back in a while. Assalamu alaikum and goodbye to all of you.